हेलो गाइस, वेलकम टू द स्ट्रीम। और आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं जेंशिन I see the इम्पैक्ट। value in my own work. आज तो कुछ खास नहीं बट लेकिन आ रखा है ना स्पाइरल वगैरह, तो वो करने की सोच रहे हैं अपन। स्पाइरल पूरा 0 स्टार पहले किया था, आई थिंक मैंने 35 स्टार हो पाया था, 1 स्टार फिर से बच गया था। इस बार देखते हैं कैसे बॉसेस आए हैं, उस हिसाब से हो पाएगा। 1 मिनट पहले कमीशंस कर लेता हूँ। इसका कुछ तो है, पता नहीं। अरे लेकिन पहले देख लेना चाहिए था मैंने क्या सेलेक्ट किया, वरना अब इसको। अच्छा चलो, बना पड़ा है पहले से ही। मुझे लगा बनाना पड़ेगा इसको देने के लिए। नाइस। कौन से वीसी में? अरे वो मसीहा हुए वाले वीसी में आ जाओ, कोई सा भी ड्रैग करता हूँ। या फिर हाँ, उसी में आ जाओ। जनरल पे ज्वाइन करो। एक मिनट में भेजता हूँ लिंक। I shall protect the lady of the clan.
Melusines are beautiful creatures. कोई सा भी They कर are लो। the pride of Fontaine. Be sure to befriend them and cause them no harm. ये बंदा अलग बोलता रहता है मेलोजिन्स को लेके। कौन सी वैसे में? नसिया हुए वाले उसमें आ जाओ ना, एक लिंक भेजा है मैंने। CNS वाले में अभी है नहीं मैं, मतलब उसमें ज्वाइन नहीं हूँ मैं। ये सही है, सेबोटाज द बैलून। Illusion shattered. Settle down. Be sanctified. Buckle up. Hey! There is no escape. Silence. अरे इम्यून है क्या हाइड्रो से? ऐसे कोई बात नहीं, रेडन तो है ही। Now you shall perish. Shine down. Ha! लास्ट कमीशन नहीं, अभी तो होगा दो। अरे इलेक्ट्रोफॉग चलो काज हुआ है, वरना मुझे लगा ये फिर दिक्कत देगा। ये कमीशन बहुत फालतू है यार इनाजुमा का। वाह। Wind strider. कंप्लीट। Add Astra. Thank you for Add Astra. अभी पहले रेजिन बना लेता हूँ ना कंडेंस, वरना फिर वो आगे बढ़ेगी भी नहीं। अच्छा ऑलरेडी बन रखा है या? पहले तो स्पाइरल ही किया जाए, क्योंकि मेन प्रीमो तो उसी में मिलेगा।
पिछली बार भी 36 स्टार नहीं हो पाया था। इस बार कौन सा बॉस है पता चलेगा? अभी नहीं। अच्छा पता तो चल ही गया। पता नहीं, इसको मैंने पहले कभी मारा नहीं है, इसको तो मारा है। देखते हैं, अभी तो ये कर लेते हैं पहले। देहा किधर गई ये? और भाई अब बता। हेलो। हेलो। हाँ ठीक है, आ गया ना, बस ठीक है, खेल ले। No, my sword. Let me weave you a bride. Quietly now. Game's up. On silver. मैं कह रहा हूँ, अगर रिवॉर्ड लेने का मन हो बताइए एक बार। क्या क्या क्या? अगर जिस दिन पालवर्ड लेने का मन हो तो बताइए। हाँ इसका लेना तो है पावर, मेरे पास है नहीं ना। वो महाकाल वाली आईडी में नहीं है। क्या है इसमें पावर तो तेजी सारी चीजें होना वाली थे। अरे वो पहले वाली आईडी रही ना, मेरी दूसरी है, महाकाल वाली है। हाँ वो तो पता, तेरी वो वाली तो महाकाल वाली तो धोनी की थी, हाँ वो थी। हम्म। इसमें भी तुझे मैंने पावर दे दी होना तुझे। ठीक है। और बताओ कहाँ बिजी थे इतने दिनों से? बस यूं ही, कहाँ नहीं। कॉलेज वॉलेज। हमें पता चला तुम कोआला से भी मिले। हाँ कोआला से मिले थे ना, कॉल किया तो था तुझे, वो भी भोपाल में आया था। हम्म चल चल। No, my sword. और आजकल गेमिंग वेमिंग नहीं हो रही? सब छूटा लगा इस बार। अबे सब गेमिंग में भी सब खत्म भाई, जो है फोन में खेल लेता हूँ, Power of Gugwa. फोन Game's ला up. देता है। अच्छा। बस वही है हमारे साथ मोबाइल गेमिंग में ना, अब सब खत्म। बस भाई खेलता वैलोरेंट और तो पता ही छोटा। हम्म। और अबे क्या जमा रहे हैं ये लोग? जमा के मारेंगे। Rain outlines. साला एक फ्रीज कर रहा है, एक पानी डाल रहा है। Things are about to get dicey. No, my sword. Witness the power of Gugwa. Here comes the cash. अच्छा अकेला बच्चा है क्या? The wrong test subject. There is no escape. One with nature. Let's get it on. Clouds high. The birds come. Silence! Be sanctified. Picked the wrong test subject. Picked the wrong test subject. Bow your head. और बताओ सब ठीक? सब बढ़िया। चलो सही है। आजकल कौन सी सीरीज देख रहा है? एनिमे आजकल देख रहा था। कौन सा?
इधर वन पीस खत्म किया, अच्छा। उसके बाद फिर Weave you a bird. ब्लेज स्टार्ट करने वाला हूँ, अभी थोड़ा सा देखा है। किस पे देख रहा है? क्या क्या? किस पे देख रहा है? वही जोरो वगैरह पे। Time to go. उसकी सब्सक्रिप्शन को इतना ज्यादा एनिमे प्रॉपर देखना कौन सा है ये? Transgression. क्या ये? Know my sword. Witness the power of Gugwa. क्रंची रोल की इसमें सारे एनिमे हैं, हिंदी में भी डब। अरे हाँ वो तो है, बट जापानीज में सही लगता है। भाई मैं तो बता रहा हूँ, मन उसमें जापानीज है। About to get dicey. Ring cutter. Shine down. Into the wind. म्यूट करो, मैं सीरीज देख रहा हूँ ना, वरना इस सीरीज के बाद तेरे फोन में उठ जाएगी। अच्छा Inazuma shines eternal. There is no escape. Settle down. इजी है रे इससे तो। पहला क्या, दूसरे में क्या है? Shine down. The wind knows me. One with nature. Clouds high. The birds look alive. The time's back. Bow your head. और मैं पूछ रहा था, हम्म क्या आजकल कौन सा नया गेम लेने का मन कर रहा है, क्या करने का दिल कर रहा है? पता नहीं, पैल वर्ल्ड अच्छा लग रहा था, देखते हैं। Rain पैल outlines वर्ल्ड your यार fate. अच्छा है, बट ना वो है ये काइंड ऑफ पोकेमॉन आर्क हम्म सर्वाइवल, पोकेमोन और आर्क सर्वाइवल का मिक्स लग रहा है। बट इसके बैकग्राउंड साउंड बहुत इंटेंस है, जैसे अपना वो नहीं था सी Busted. कौन सा? सी ऑफ थीव्स, अच्छा अच्छा हाँ। समुद्री लुटेरे, हम्म वैसे इसके फाइट्स के टाइम जो इंटेंसिटी बनानी चाहिए आजकल गेम्स जो बना रहा है हम्म वैसा। और मैं तुझे रिकमेंड करूंगा इसका वाला लिए, Illusion shattered. 1560 रुपए वाला। The wind knows me. कौन, अभी तो खरीद भी नहीं रहा मैं। Fallen leaves. Adorn अभी my तो वो night. चल रहा है इसका Let's get it अपना on. प्री अराइवल एडिशन है ये, बट इसके प्राइस इंक्रीज होंगे मेरे हिसाब से। The wind knows me. देखते हैं, अभी तो शायद केस भी चल रहा है ना इस पे। Clouds high. The birds हाँ पोकेमोन वाला केस कर दिया। लॉजिक नहीं बनता कि पोकेमॉन नाम की चीज यूज नहीं हुई। बट फिर भी कॉन्सेप्ट उसी का है ना। अबे कॉन्सेप्ट है भाई, ऐसे तो GTA 5 से भी कॉन्सेप्ट उभर के वो निकाल रहा है मुंबई गली, फिर तो वो भी इस पर चालू हो जाएगा। हाँ पता नहीं, लॉजिक नहीं बनता क्योंकि उनका तो उन्होंने यूज़ नहीं किया, बात तो सही है। उन्होंने एक पोकेमॉन का भी नाम नहीं सेम रखा, एक भी पोकेमॉन सेम नहीं निकाला। उन्होंने देख जैसे अपनी पोकेबॉल होती थी, उन्होंने पाल के निकाल दिया। Rain outlines ये your मुझे हम्म लगता है कि आदमी जान लोगे तुम वहाँ पे बैठ के। वो मुझे तो ये लग रहा है उन्हें डर लग गया कि भाई ये बहुत अच्छा चल रहा है, पता चला हमारे गेम टूट जाए। यही रीजन है मेरे हिसाब से, तो और कोई है ही नहीं। वही रीज़न है। क्योंकि इनका गेम अब इतने नहीं चल रहे हैं, जितने भी पोकेमॉन वाले थे सारे पाल वर्ल्ड पे आ गए। जो कट वो बिल्कुल वो लॉयल फैन है जो पोकेमॉन नहीं छोड़ेंगे वो खेलेंगे इसमें मैच को, काफी सही ट्राई कर रहा है पाल वर्ल्ड। Fallen leaves. Adorn my night. Let's ये get it तो on. हकीकत है ही, लोग ट्राई तो करना चाहते हैं कोई भी नया गेम आता है। हेलो
क्या हुआ क्या? मैं कह रहा था अब तो कोई भी नया गेम तो ट्राई करना ही चाहेगा। वो तो है ही। वैसे अच्छा भी है वो। तो पता है राजीव का एशियन मोबाइल पे भी आ गया। राजी मैंने नहीं देख, वैसे मैंने खेला नहीं अभी तक। वो इंडियन गेम्स थे। पता है वो, बट वो खेला नहीं। नेटफ्लिक्स के थ्रू आई है। अच्छा। और सही मौज काट रही है वो गेम। अरे बच्चियों, इधर बैठा था वो अपने वाले सर्वर। दूसरे पे हाइड्रो। Gotcha. Things are about to get dicey. अल्लाह, ये इतनी पास कैसे पहुंच गया मैं? Quietly now. Rain outlines your fate. Let me weep. Game's up from silver. अबे ये दिक्कत करेगा। Gotcha. Witness the power of अलविदा दोस्त। अरे बच्चे इधर पता नहीं, मुझे भी नहीं दिखा रहा था, अभी परमिशन मिला मुझे इस पीसी का। There is no escape. Into the wind. One with nature. वीसी में हमको चाहिए, हमको ज्वाइन करना है। The birds परमिशन दे दो। Bow your head. Be sanctified. अब तो डिस्कॉर्ड ने भी बड़ा विजिट कर दिया। क्या हुआ? डिस्कॉर्ड ने क्या किया? देख खुद देख, मसीहा कौन से आले? मसिया 2.0 होगा। मसीहा को तो quietly now. Here comes the catch. No, my sword. है नहीं क्या सर्वर में? Your birth. क्या क्या? है नहीं क्या सर्वर में? ऑनलाइन नहीं है क्या, पता नहीं। थे तो अभी। एक रोल दे दिया, मिला नहीं मिला इसको? दे दिया। Rain outlines your fate. Witness the power. Game's up from silver. अब मिल जाएगा। देख ज्वाइन कर पाएगा। दे दिया। Busted. यार एनर्जी रिचार्ज का कुछ करना पड़ेगा सर, दोनों का एक साथ हेल्थ रेडी नहीं होता। Quietly now. Rain outlines your fate. Things are about to get dicey. Witness the power of Gugwa.
Illusion shattered. The wind knows me. Fallen leaves adorn my buckler. Silence! You're dead meat! मौसिया भाई को बोल दे मैंने उनको दे दिया वो परमिशन यूट्यूबर वाला रोल आ जाएगी किसी में बैठ जा ट्राई कर दूंगा उन्हें बोल दे कौन सा वाला रोल? यूट्यूबर अच्छा बैठे तो किसी में ट्राई कर दूंगा तेरे वाले में ये पर्टिकुलर जो चैनल में बैठा है वो तेरे नाम का है ना Busted. तेरे गेमिंग का तो उसके साथ अबे ये उड़ने वाला क्यों आ गया? ऐसे इसको गिरा तो सकते हैं। कैसे Here comes the catch. Let me weave you a verse. अबे उठ गया वो। एक तो पहले मार ही दूं। इसको वापस गिराना पड़ेगा। Gotcha. Rain outlines your fate. Witness the power of the game's up. Comes over. Illusion shattered. Another test subject. One with nature. Clouds high. The birds. Bow your head. The tides beckon. Picked the wrong test subject. Picked the wrong test subject. Settle down. There is no escape. Buckle up. Torn to अबे नहीं डॉज हो गया। किधर गई? Be sanctified. चलो अब न्यूब्लेट ही मारेगा। Winter. Where are you? illusion shattered. Bow your head. Let the mighty be humble. This is Her Majesty's gift. You can't hide. मौसिया भाई थे ही नहीं सर्वर में इनवाइट भेजा है अभी उन्हें नहीं थे शायद से। Belongs to us. अबे कितने लोग हैं ये? 22 सेकंड बचा है। Fallen leaves adorn my night. मौसिया 2.0 नहीं था नॉर्मल मौसिया था वक्त 10 सेकंड में वो मरेगी भी नहीं जहाँ तक मैंने ध्यान नहीं दिया। रुको स्टार्टिंग से करते हैं। Mirror images to Busted. Take it easy. Rain cutter. Quietly now. Here comes the catch. Cross over.
लग जा। Gotcha. No, my sword. Let me weave you a. Game's up. Fun's over. मसिया भाई ज्वाइन नहीं होने बोल दे ज्वाइन कर लेंगे। एक मिनट। क्या कह रहा है? Illusion shattered. कुछ नहीं कुछ नहीं। अबे कितने लोग थे पिछली बार किसमें? ये गेम में The tides beckon. The wrong test subject. Bow your head. The wrong test subject. One with nature. Fallen leaves. Adorn my. Let's get it on. Silence. Shall eventually come. Purging Be transgression. sanctified. Inazuma shines eternal. अबे इतना लो क्या रेजिस्टेंस लेके आती है? Look alive. यार अभी 2 बंदे मारने मेरे पास 1 मिनट है। This body. Let the mighty be humbled. Where are you? No mercy. Torn to oblivion. Into the wind. Fallen leaves. Adorn my. Settle down. हो जाएगा इस बार। Sanctified. साला 11th फ्लोर में भी दिक्कत होगी क्या? लॉल। इसको कभी मारा नहीं है मैंने, ये पता नहीं वो वाला है तो पहले मैं इसकी टीम ले सकता हूँ। न्यू विलेट। There is no escape. One with nature. चल भाई तू आराम से खेलने में जा रहा हूँ, ठीक है? One with wind and cloud. Silence. The tides beckon. साले अलग अलग क्यों हो गए एकदम? Be sanctified. Settle down. Illusion shattered. The wind knows me. Clouds high. The birds come. Inazuma shines eternal. Shine down. The tides beckon. Silence. मर जा वही। Torn to oblivion. There is no escape. हाँ अच्छा, इलेक्ट्रो रेजिस्टेंस। Bow your head. मुझे लगा साला 400 का किधर से डैमेज हो रहा है रेडन से। किधर है बंदा? अच्छा अबे Rain outlines. ये है क्या? Rain. Here comes the catch. Higher, higher, hands on fire. लो कोई फायदा भी नहीं हुआ।
Let me weave you a bird. Game's up. Fun's over. इसको तोड़ते भी कैसे हैं, ये भी नहीं याद है। अच्छा टूट गया। बट कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा रेडी नहीं है। Things are about to get dicey. ये 7 सेकंड में तो हो पाएगा नहीं। एक काम करता हूँ, फिर से ट्राई करता हूँ। Shine down. One with nature. Fallen leaves. Adorn my... Be sanctified. Silence. Illusion shattered. The wind knows me. As one with wind and cloud. The tides beckon. Let the mighty be humbled. An oversight on my part. ये तो जल्दी हो गया। वो कॉलेज वाले रख ही लेते हैं ज़्यादातर तो, और फिर वो दे देते हैं, बट दूसरा कुछ अपना डिग्री। Let me weave you a verse. Know my sword. Here comes the catch. 12th वाले रख लेंगे। साला लगा भी नहीं उसको। Rain outlines your fate. Rain busted. Game's up. Fun's over. अरे करना क्या है? फक। Gotcha. Witness the power of ये तो नहीं होने वाला, पता है मुझे। busted. Here comes the catch. Time to go. 2000 डैमेज पड़ रही। Rain outlines your fate. Rain cut. 9 सेकंड है। अबे क्या हो रहा है? नहीं हो पाएगा। चलो बाद में फिर कभी करते हैं इसको। Let me weave you a अभी तो फिनिश करूं। Your journey ends. Target wind strike. Razor sharp. Fallen leaves. Adorn my nut. Where do you think you'll...
the wind. One with nature. Clouds high. The birds. Buckle up. Bow your head. Be sanctified. Goodbye. Your coming was foretold. Dance with me. Bloom as the shine down. The wind knows me. As one with wind and cloud. Let's get it on. Now you shall perish. Illusion shattered. साला डॉज कर जाते हैं स्कल्ड। The eternal oasis of long last. कौन है? अबे इस बार सारे वैसे टाइप के बॉस आए क्या जिससे मैं Time to act. मुझे गुस्सा आता है लड़ने में। Busted. साले छुप जाते हैं ये लोग। Here comes the cash. Quietly now. Rain outlines your fate. अबे नहीं, फिर गया इसका एनर्जी। Things are about to get dicey. Let me weave you a verse. अब तो मुझे 12th फ्लोर करने का मन भी नहीं कर रहा अभी। मैं नहीं कर रहा हूँ। ये कर करके मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मैं बात नहीं करना चाहता पर मेरा भी कर लो। ये क्या है भाई? हेलो। 12th नहीं करूँगा मैं जो है, 12th बहुत बेकार है इस बार का। 11th तक कर सकता हूँ। अबे देखना था मुझे क्या मिला है। वाह, नहीं देखना था भाई। ट्वेल्थ ही है, देखा नहीं मैं अभी। अच्छा 12th ही बच जाएगा। एक तरफ आप कौन सा? अच्छा हाइपर ब्लूम है ना। हाँ हो जाएगी आपकी टीम से। मुझे भी नहीदा चाहिए। नहीदा का रिचुअल बताओ मसीहा भाई, कहाँ जाके निकालूं? बताओ मसीहा भाई, कहाँ जाके निकालूं नहीदा को? जिधर उसको पकड़ के रखा था। हम्म, वो लोकेशन याद नहीं है बट देखते हैं, यहीं कहीं था।
ठीक है बस। ओ फिर मैं भी ट्राई करता हूँ। इधर ही वो डॉक्टर आया था ना, पता नहीं। कितने विश हुए हैं? ज़्यादा तो हुए भी नहीं, 4 3 7। 3 विश और किधर से मिल सकता है या? तो डायरेक्ट 10 पुल करता, बट कौन एक्सप्लोर करेगा, अभी नहीं कर रहा हूँ। चलो एक एक मार लेते, कम से कम गामिंग तो मिल जाए। अरे एक 4 स्टार तो दे ही दो यार। ये तो चलो 4 स्टार मिल गया। गामिंग, वाह। ड्रैगन स्वेन वैसे ठीक है। एक रेडन को अगर कभी यूज़ करूँगा तो दे सकता हूँ। लास्ट एक और पुल। चलो ये काय का अचीवमेंट था? अच्छा ओके। ये दूसरी बार है ना जब मुझे वेपन मिला है, या फिर पहले क्या मिली थी? पारूजान मिली थी शायद। अच्छा हाँ, उसके पहले फवोनियस कोडेक्स मिला था। वाह वाह। चलो आर्टिफैक्ट कर लेते हैं अभी तो। क्या गाने बहुत दिन से नहीं चले। और यूला भी, यूला ट्राई करते हैं। There is no escape. Busted. Here comes the catch. Everybody stand back. Shut up. Freeze to the core. Eye for an eye.
अबे आलपी पैक तुरंत। ये Shine क्या down. था भाई? Quietly now. Things are about to get dicey. Teamwork is dreamwork. Crush. Beg for mercy. Crush. क्या पे सारे वैसे वैसे पीसेस मिल रहे हैं। मुझे बस एक सर्कलेट चाहिए जो कि अच्छा सा हो। क्रिट रेट क्रिट डैमेज कुछ भी चलेगा। I'm going in. Illusion shattered. Torn to oblivion. Beg for mercy. Vengeance will be mine. I condemn you. Well met. Yes, I got. अबे ये दिक्कत कर रहा है बार बार। साले क्या प्रॉब्लम है बे तुझे? About to get dicey. Everybody stand back. अबे तो ये जिंदा भी नहीं हो पाएगा। Gotcha. Take it easy. ओके, ये कुछ सरप्राइजिंग था अचानक। नाइस नाइस। अब रोल कैसा होगा वो देखते हैं। Quietly now. Game's up. Fun's over. Going in. ये अभी तक नहीं आई क्या? Now you shall perish. Illusion shattered. Everybody stand back. Here comes the catch. There is no. Torn to oblivion. चलो एक पीस तो अच्छा। भोपाल हो या ग्वालियर? भोपाल में यहाँ भी तो। Shine down. Game's up. Fun's over. Let's light it up. Teamwork is dreamwork. Crush. Illusion. Inazuma shines eternal. Here comes the catch. I'm going in. अबे रुक जाओ। Freeze to the core. नाहिदा और क्लाउड रिटेनर वैन आ तो गया बट हमें नहीं मिली। बालू भाई को मिल गई नाहिदा। मुझे भी नाहिदा ही निकालना। अभी तो क्लाउड बाद में निकाल लूंगा रीरन पे। Teamwork is dreamwork. Now you shall perish. अबे Beg for mercy. ये हमेशा का हो गया इनका। Flood of frost. Rack and ruin. फिर मरेगी ये। हटा ही देता हूँ। Busted. Things are about to get dicey. Everybody stand back. Shudder. हेलो हेलो Beg for mercy. अभी ज़्यादा हुए भी नहीं होंगे और वैसे भी 50-50 है। देखूं क्या, पता नहीं 30 के आसपास हुए होंगे।
हेलो। अरे एक माइक ऑन नहीं था क्या? मैं बोल रहा था लो। नहीं नहीं था। कितने किए? 30 के आसपास फुल हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए। 30 हुए? कितने वो मिले मतलब? कुछ आया? मतलब 50-50 है कि क्या है? 50-50। वो रेडन जीता था ना, मतलब रेडन लास्ट निकाला था ना। ये सब जीत। कर लिया तूने अभी आज के स्पाइरल? हाँ स्पायरल अभी किया ना। और स्टार डस्ट जो भी हो। उससे स्पिन मिले? हाँ। उसी से मिला के 30 हुआ? हम्म। हम्म। रेडन लास्ट लास्ट में निकली थी, इसीलिए। अभी एक्सप्लोरेशन करूंगा उसका ना, तो शायद थोड़ा बहुत और हो जाएगा नए वाले एरिया का। नहीडा C2 जाने की कोशिश कर। नहीं था, C0 मिल जाए वही काफ़ी अभी तो। तू भी मिल जाएगी। इस बार के बॉसेस भी नहीं मारे होंगे मैंने शायद से। अबे इसको मार। बढ़िया। एक मिनट, बॉस क्यों मार रहा है? हफ्ते प्रिमोजेम थोड़ा वाले। मिलेंगे। प्रिमो थोड़ा अरे मिलेंगे। वो तो हो गया प्रीमो वाला जितना मिलना था। नया वाला इवेंट वो स्टोरी कर ली? नहीं वो बचा है। जय दवाना 60 प्रिमो। देखी भी नहीं मैंने स्टोरी। तेरे मैंने भी स्ट्रीम पे नहीं देख भी देखी। लूंगा, है ना? और वही नींद इसकी आ भी, रही है। क्लाउड की भी नहीं देखी मैंने। क्लाउड की स्टोरी की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा लॉल। और कुछ नहीं आया। एक और है ना, उसमें बहुत सारे क्वेस्ट आए नए वाले में, पता? कौन सा? कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा? पता नहीं लेकिन बहुत सारे हैं। मेरे इसमें क्यों नहीं दिखा रहा? नहीं वो आप खोलोगे एरिया में जाओगे तब ना। अच्छा, एरिया आया है क्या नया वो? तब तो प्रिमोजेम से वही तो बोला, एक्सप्लोर करने पे बहुत सारे मेरे को आज प्रीमो। मैसेज आया था गेंशिन वालों का ईमेल पे काय के लिए? कि अपने 10 प्रीमो 10 फुल वो करने आ जाओ। वो दिख तो नहीं रहे। आ तो अभी गया मैं। अभी तो नहीं आएंगे वो। मेल क्यों डाल रहे? मैं तो आ गया। क्या है मेरे प्रीमोजेम? You're क्या है मेरे trembling. 1600 Is प्रीमोजेम? it the cold or just cowardice? Into the wind. काम हो गया मैं। Buckle up. Let the mighty be humble. Bow your head. Justice is blindsided. आवाज नहीं आ रही मेरे माइक से? नहीं, आपकी आ रही है। बढ़िया। पीछे मूवी चल रही थी। अच्छा। अरे बार बार वहीं आ रहा है। Settle down. तो एरिया में फाइनली कौन सी रिजल्ट मिल रहा है? समय लियो के कि इसके फाउंटेन के? लिए लिए। तो बीच में आ रहा था दोनों के। पता नहीं, फिर भी लिए वाले डन। There is no escape. और वहाँ नया नया मैकेनिक्स पे आया, मजा आएगा करके देख। Fallen leaves. Adorn हाँ, light. ना, फिर। Inazuma shines eternal. The tides beckon. Bow your head. Settle down. Embrace your searing reckoning. Let's get it on. Hi. Wind strike. Illusion shattered. Silence. All must burn.
The risk is growing, but it poses no threat to me. Let the mighty be humble. I never asked for redemption. Never. एक और बचा होगा बॉस। मैं ये सोच रहा हूँ ऐसा मारूं या चाइल्ड। बच्चा मारेगा। अबे 2 आए क्या नए? 2 स्टैचू आए? हाँ 2 स्टैच। बहुत अरे बड़ा उनको एरिया पूरा है फिर जोर तो। ही दिया। हाँ बहुत बड़ा एरिया होगा फिर तो। काफी बड़ा है। बाप रे। बट फाउंटेन जितना नहीं है ना, क्योंकि फाउंटेन अंडर बोला वाटर भी है। बोला कैज़म टाइप कुछ होगा। नहीं ठीक ठाक बड़ा डाले हैं एरिया। बड़ा है, कैज़म से बड़ा है। हम्म, ये क्या एडेप्टाई का एरिया है क्या पूरा? हाँ उसमें जाते ही आपको एक मिलेगी हाँ एडेप्टाइज। मैं टीपी किया, वो फुजिन आ गई। हाँ हाँ हाँ, वही। इन लोगों ने जान के एक टीपी अनलॉक दिया था। टीपी करते ही वो आ जाएगा क्वेस्ट चालू। अरे पर इसमें वो नहीं होगा ना एक भी? क्या सुधांशु? क्या नहीं हुआ? क्या कहते हैं अपन इसको? बट कुछ ऑफरिंग वाला भी आ रहा है शायद से। हाँ ऑफरिंग का, हाँ है स्टार ना? होगा ना सीजन। है। है। कुछ तो है सिजिल जैसा जिसको अपन ऑफर कर सकते हैं। अरे ये क्या, अपन इसके पार नहीं जा सकते? क्या करना पड़ेगा ये? मेरे को उधर ऊपर उड़ना पड़ेगा क्या? वो कैरेक्टर लगेगा क्या? क्या कर क्या रहे हो? यूज एडेप्टर टू लीव द डोमेन। पता नहीं टीक से कुछ तो होता है उसमें। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। टीवी है। There is no escape. Now you shall perish. क्या गाइस, ये कौन पूछ रहा है नहीडा एंड क्लाउड रिटेनर बैनर बैन? नहीं बैनर नहीं पूछा था मैंने, उनसे ये कब हाँ निकाल रहा है ठीक दोनों? है, मतलब तो वही चुहा ना। दूसरा ये कब निकाल रहा है? अच्छा तुम्हारे पास में मुझे तो पता है बैनर आ गया, मैं खुद खेल रहा हूँ। निकाले कुछ सीटू ही, सीटू पहले से मैं क्या पूछ रहा हूँ। सीधे क्यों करेंगे? क्लाउड रिटेनर निकालोगे कि उस वो न्यूबलेट पे वो निकालोगे, कॉन्स्टलेशंस वेट करोगे? न्यूबलेट। मैं अच्छा तो रिटेनर पे स्पिन चालू कर दिया। Fallen leaves. Adorn my night. Settle down. ये क्या मैं है? मेरा वो क्या? पूरा लेवल 10 कर लिया सुधांशु, पता है? कौन? वही जो नया वाला आया है, मैक्स कर दिया पैन चोरे। लोल। अभी तो स्टार्ट हुआ था मस्या भाई। हाँ इतने में आप क्या कर रहे हो? There is no escape. क्या करोगे अब बाकी पूरे वो? अब एक्सप्लोरेशन पूरा नहीं किया हूँ, बस वो उसको लेवल अप किया हूँ। क्या बोलते हैं, जैसा ड्रैगन स्पाइन वगैरह में नहीं आया, ट्री था वैसा, वैसे ये तो चेंजिंग विलेन जैसा दिख रहा है सीधा। 50 था ही कलेक्ट करने को। मुझे कॉल आ रहा है ऑफिस में। Wind strider. As one with wind and cloud. तुम्हारा तो सुधांशु अभी वो खुला भी नहीं होगा। अभी मैंने क्वेस्ट किया नहीं है ना वो वाला। You asked for it. कुछ सुधांशु को 2 पुल मिलेंगे उसमें इवेंट बैनर के लिए, लॉल। 4 स्टैंडर्ड के लिए, Let's get it on. और एक वेपन का क्राफ्टिंग मटेरियल निकाल सकते हो बस, कोई सा भी एक। लेकिन प्रीमो भी तो है 30। नहीं प्रीमो कहाँ था? Let the mighty be humble. है तो मेरे क्वेस्ट में दिखा रहा है 30 प्रीमो। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, फिर वो ऑफरिंग। हाँ ऑफर करने वाले को।
हाँ उसमें थोड़ी ज़्यादा होगा। करे तुम स्पाइरल नहीं किया ना हरामी। अरे अभी कहाँ, अभी तो मैं अपने ही रेजिन उड़ा रहा हूँ। क्या हुआ भाई, तुमको मिल अब गई आया क्या देख। फुर्सत अपने यूट्यूब स्ट्रीमिंग वाले दोस्तों से बात करके? लॉल। मुझे तो नहीं आया कुछ में। स्ट्रीमिंग वाला दोस्त करिए हमसे, वो भी पहले दोस्त। नलिन हेलो, आप भी तो कभी जानते हो। दिखभा नहीं करता, मुझे लगा वही है। कभी दिखभा नहीं करता है, जैसे ही तुम्हारा यूट्यूब लाइव स्टार्ट होता This है ये realm. फिर से ज्यादा जाग जाता है। अबे ऐसा है, इसको अपनी शक्ल तुमको दिखाते रहना पड़ेगा अगर कंटिन्यू रखना है तो। इसको याद दिलाना पड़ेगा कि हाँ हम भी हैं। हो सकता है। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, आ आज कुछ ज्यादा ही नहीं मुंह चमका लिया अपना। क्या गया आ चमका गया। लिया क्या? हाँ बहुत हो ज्यादा। जाएगा। अब तो हटा लेता हूँ। ब्राइटनेस पेल के लगा दियो क्या? नहीं, लाइट्स लगाया था। वो है बीटिंग है। ओ फुल If you ever अंधा पैसा। अरे ओवरलैपिंग है यार फिर से। उधर देखो ओवरलैपिंग हो रही है। 12 बजे बॉस से। अभी ज्यादा ब्लैक हो गया क्या? एक मिनट देख रहा हूँ, आने दो। नहीं नहीं। नहीं, अब नॉर्मल है, अब डिफॉल्ट है। फिर जला दिए क्या? नहीं। यार ये छोड़नी पड़ेगी। अच्छा ये तुम्हारी स्क्रीन की भी लाइट पड़ रही ना मुंह पे। हाँ वो हो रही होगी। चलो देखेंगे। मारुति मारुति। अपने अपने टीम कैलेंडर पे होगा ना कि नहीं है? टीम कैलेंडर पे देखते हैं ना। मेरा चालू हो गया मेरा। हाँ कल 11-12 बजे से 11 बजे से 11:30 से 11:15। अपनी पहचान क्या बता दो कौन है? नहीं मैं बता रहा ना नहीं है। अरे हाँ है उनको म्यूट कर दो। राघव है तू है मैं हूँ। करता हूँ। पूर्णिमा है। आप ये पुरानी आईडी से क्यों आ गए? This opportunity is quite hard to come by. Well then, amuse तुमको me. ढूंढ रहा था मैं, Surrender is a valid option. लॉल। I promise I'll कौन be सी gentle. गुफा में छुपे हुए हो? rain cutter. How Game's up. unbecoming. Game's over. Passable effort. Passable effort. Not bad. You've got a trick or two. भाई साहब जब तक उठाव का ई नहीं दबाए थे लग रहा था जैसे चाइल्ड की 2-4 लाख एचपी है। इसका भी कट सीन अच्छा था चाइल्ड का। साइड के तो सारे कट अच्छे हम्म, हैं। बस चूतिया लेकिन लास्ट में तगड़ा वो काटा था। फेंकने वाला अच्छा नहीं था। चूतिया लेकिन तगड़ा काटा था। हम्म। Your strength is praiseworthy. I too shall use all of mine. था टैग लिया। Don't you dare disappoint me. Foul legacy, the devouring deep. अबे ये सब भी हुआ था या? अभी कट सीन देख के पता चल रहा है। मुझे लग रहा है पहली बार के बाद दोबारा देखे नहीं हो तुम। ऐसे ही तो स्कारामूस का भी है। धरती भरती फाड़ दिया था। ऐसे लग रहा है ऊपर से कोई ड्रोन आ रहा है। Busted. Rain outlines your fate. Witness. अरे एनिमेशन रेंडर में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो एक काम करते हैं क्लाउड डाल देते हैं उसके आगे, फिर नीचे ले जाते हैं। तो तुम जब भी कोई हैवी डैमेज मार रहे हो तुम्हारी स्ट्रीम जो है तो बफर में निकल ले रही है। लाल, मेरे में तो सही चल रही है। ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे में तो कोई लोड भी नहीं है।
जब भी तुम मतलब सब कुछ चलाने के बाद उठाओ का ई करते हो हम्म। अटकती है। अच्छा, पता नहीं। भाई कितना सफेद, कितना ब्राइट करके रखते हो बे अपना स्क्रीन, पूरा मुंह सफेद हो जा रहा है तुम्हारा। अरे ये जेंसिन का काम है यार, इसका स्टार्टिंग वाला स्क्रीन भी खोलो तो वही होता है। होंकाई स्टार रेल वाले तो फिर भी फिक्स कर लिए, पहले उनका भी हम्म। वही था। रात करता हूँ देखो, फिर नॉर्मल हो जाएगा। सेलेस्टिया लाइट है अपने ऊपर। अभी पता है उससे पोस्ट स्टार में भी एक वेपन मिला, वही ड्रैगन स्वेन। मुझे लगा गामिंग वामिंग मिलेगा। वो वाला गाना सुनो सुधांशु? कौन सा? मैं फुल बंदा तू तारा सजना कान मरा लो अरे यारा अरे, सजना लौड़े लगे दोबारा सजना, सुने नहीं? नहीं 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 नहीं, मतलब इसका ओरिजिनल वर्जन सुना हुआ लग रहा है, बट ये नहीं सुना था। अभी एक और वो मिला है फ्रेजाइल, जाके यूज कर ले तो। अरे हाँ, मुझे एक पीस मिला था ना, मैं भूल ही गया अपग्रेड करना। शिट। नहीं, सर्कलेट मिला था, वो भी अच्छा सर्वर हुटाऊ म्यूट के कर लिए। पाई, सर्वर से अनम्यूट कर पाएगा कि नहीं खुद को आज? साथ बात ही कर रहा हूँ। चेक करूं। नहीं ये हुआ। मिला था। वो अब अपने हेडफोन और फोन पीसी वीसी बंद करके भाग गया है। ओके। सिवाय बस स्ट्रीम मत देखना। आंख गड़ा लिया मैं। अरे, अटैक आया। अरे अबे भाई यार, नहीं मिला जैसा मैं तो चाहिए चाह था। रहा हूँ एलिमेंटल मास्टरी सब जाए। वही जा रहा है, मैं भी क्या कर सकते हैं। शॉर्ट वे। 20 तक का पहुंचा है बताओ, तुम्हारा तो अभी तक हो गया होगा ना? नहीं हुआ ना बीच डिफेंस में। परसेंटेज लगाओ ना ऊपर बेस एक्सपी से। वही किया, वही किया। अरे बहुत डिले है मतलब। मैं फुल बंदा तू तारा सजना कान मरा लो यारा सजना। कहाँ से मिल गया तारा था तुमको आपको? भेजा था मैं ये। अभी क्या डालूं इस पे? नहीं, एक मिनट, ये काय का हो रखा है? त्रित, अबे डालो। सब स्टैट इतने घटिया है ना। खैर फिर भी ठीक है इससे तो। माय गॉड। एक ही मिला मुझे, क्या कर सकते हैं। ये माय गॉड उसकी तरह था, ऐसी भी पढ़ दी मन की। अच्छा। माय गॉड दया। सारा का सारा जो तो उसमें गया ईएम में। हम्म। एक रेट मिला लेकिन। नहीं फिर भी ठीक है, अगर इसका वो कोई क्रिट रेट वाला वेपन लगाओ ना तो फिर चेंज कर सकता हूँ। मैं भी सोच रहा हूँ यूरेमिया पे से रस्ट हटा के वो डाल दूँ, स्लिंग शॉट। स्लिंग्स अच्छा, 3 स्टार वेपन अच्छे नहीं है वैसे भाई, क्रिट रेट देता है रे बाबा। बट चाहिए नहीं वो, फिर डैमेज उतना ही कम हो जाएगा ना जोर जार के। अब इस बार तुम्हारा कुछ तो करने को स्टार बचा नहीं है, फिर भी तुम मेरा कर नहीं रहे हो। बचा तो है, बट छोड़ो अभी। अपने अच्छे कंप्यूटर होने का फायदा नहीं उठा रहे हो। लास्ट आपका 12th ही बचा है ना बस?
12th। 12th में दिमाग खराब हो जाता है पता है। बाकी सब में मोबाइल से किया था पता है। इजी अच्छा सिंगल लॉल, हैंडेड प्रो प्लेयर। कर कैसे लिए? हाई क्या अल्टी ई स्पैम करके बस लेफ्ट क्लिक पेले रहो। आया मैं आपका डायरेक्शन लॉग भी नहीं इन बदल रहा करके। था मैं तो। हो तो जाएगा मेरा भी इस बार 12th, बस थोड़ा वो है कि कौन ट्राई हार्ड करेगा अभी। था क्या कि नहीडा का बस ई करके कैमरा घुमाना रहता था, हम्म। बाकी फिर तो बस खड़े रहो दर पे, खत्म। योइमिया का भी है कि ऑटो एम की वजह से, बस ऑटो टारगेट की वजह से हम्म। कट 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 खत्म। वो बस दो तो जब उड़ने वाले आ गए थे उनसे दिक्कत हुई थी, फिर लेकिन उनको अभी पानी से भिगो दिया है। माय गॉड, प्रो प्लेयर। क्या भिगो दिया यार वसीम भाई? मैंने उन पे छिट्टे मार दिए। कल सुबह की मीटिंग हो गई। कोई है नहीं, अभी हो गई क्या? हम्म। अभी हो वाह। गई क्या वो कह रहा है? हम्म। ये सुबह अभी फिर मीटिंग फेस से कितनी गई पूरा। ऐसा कह रहा है वो। अच्छा, फिर पूरा फेस चमकेगा मेरा। देख रहा हूँ। ये क्या कर रहा है? अरे इसकी लोडिंग स्क्रीन आती है ना, सुधांशु पूरा चमक जाता है भाई। अच्छा। धनुष जैसी मूंछ दिख रही है, मूंछ के जो बीच का गैप है वो और ज्यादा हाईलाइट हो जा रहा है चमक अरे। से। वाह, सही में क्या पे क्या बीच में? हाँ अरे वही है तो ना। बता रहा हूँ, इतनी है नहीं, नॉर्मल ही है उसकी। मतलब ये क्या नकली लगा रखी है क्या? अबे हाँ बे। अरे ठीक है। हमारा था एक बंदा, उसने फोटोशॉप की थी। सुधांशु वाह, वीडियो अरे कॉल हाँ कर रहे हो क्या? बताए थे ना। हम्म। क्या नाम है, छोड़ो अभी नहीं बताता। अरे ये किसको मारने आए थे मुझसे भाई? उसके। ऐसे ही बस टहलते हुए आ गया था, मैं कहा इसको अच्छा तोड़ के घुस जाऊंगा, ऐसे सनक चढ़ी थी मेरे। ठीक है भाई, चाइल्ड को बाहर लेके आऊंगा ऐसा। नारवाल था ना चाइल्ड वहाँ, अच्छा ओ। बच्चा। फेंका था ना उसमें। साला कुछ ज्यादा ही दूर का बोल गया। मैं क्वेस्ट चालू कर जाता है, मेरे को बस सो ये बताओ कंसंट्रेट करना पहली है। टीम कौन सी लूं? देखो हाइपर ब्लूम दूसरा लेता। वाला अपना, दूसरा वाला क्या बोलते हैं, सिंगल टारगेट ही रहना है। तो योइमिया रखता हूँ। मेरे ख्याल से उल्टा ना पड़ जाए। योइमिया ए, सिंगल इस टारगेट के पानी लिए के अच्छी अंदर है ऐसा ना। स्विम नहीं कर सकते ना? नहीं, मैं ये इसके सोच रहा हूँ कोने तो। के एरिया में भी नहीं कर सकते? हाँ तो नहीं वही लेकिन कहीं करते कहीं हैं पे तो वो पहले। चलने के लिए देगा। पहले योइमिया के साथ क्या येलान रखते हो या फिर क्या पुरीना? कुछ भी, सब सेक्सी है। येलान बैनी और ये। देखने में तो अच्छा बनाना है एरिया, अरे पानी अंदर नहीं जा सकते, ये गंदी चीज है। हाँ मैं कह रहा था कि देखने में सुधांशु भाई सेकंड वाले जो बॉसेस हैं हम्म। सिंगल टारगेट है, तो वो हाँ देख साले लेना। घुस जाते हैं रेडन का हरामी। बिल्ड देख लेना एक बार। रेडन यार को क्या ऐसा बना बिल्ड होना रखे हो? चाहिए। ये स्टार्ट मछली कर भाई दिया। की आईडी है क्या? हाँ अरे 1000। हाँ, हाँ हम्म। हाँ, अरे क्या कह रहा था? न्यू वॉलेट कब निकाल लिया आपने? बन जाएगी नहीं, भाई। अभी अभी स्विच किया उसकी आईडी। क्या अच्छा कह रहा था? सॉरी। हाँ मैं कह रहा था कि जो सेकंड वाला बॉस है वो है तो हम्म। सिंगल टारगेट ही, मतलब योइमिया से इजीली हो जाना चाहिए, बट क्या है ना कि साले के सारे जमीन में घुस जा रहे हैं। वही दिक्कत है, मेरा होटाओ में भी प्रॉब्लम हो रहा था। थ्री के टू में कौन था वैसे? पता नहीं, देखते हैं, कोई वो ही था। मशीन वाला बॉस ही था कुछ तो। Gotcha. Ha! Teamwork is dreamwork. Things are about to get dicey. Solidify. दो और के में तो मेरा वो खुल जाएगी इसकी 6 मेरी फर्जन नहीं। उसकी, क्या नाम है उसका, श्रे श्रे का सुप्रो C6 हो गया। अरे ये तो बहुत सही है नया वाला, तुम मस्त उड़ सकते हो इधर से उधर।
पैरामेकेनिक है तो क्या यार इसका एनर्जी रिचार्ज हो ही नहीं रहा। अरे थोड़ा सा कम किया था। ओ शिट, सुधांशु भाई किसका? Solidify! थोड़ा आर्टिफैक्ट में हेर फेर किया था। अच्छा वो चेक कर रहा था क्विक वाला। मछली भी बना उड़ता फिर भाई दबा के Stabilize! भाई भी मछली अच्छी बनाई है। ये एलान की एनर्जी में प्रॉब्लम हो रही है, पता है थोड़ी बहुत। Things are about to get dicey. I'm going in. Fuse is lit. लड़ गई है बच्चे ने। ऑलमोस्ट हाँ। Solidify! Let's light it up. Quietly now. Gather! Teamwork is dreamwork. Game's up. Fun's over. Fire hazard. 6 स्टार ही हो जाए तो भी ठीक है। चलो ये तो निपट गया। कहाँ आया? अच्छा अभी आया ही नहीं। Allow me. There is no escape. Share my knowledge. Let the world collide. Illusion shattered. Grow, grow, grow. Yeah, yeah. Now you shall perish. Strike a pose. इसमें करना क्या, बस बैठे रहना ना। See everything. नहीडा से मारते रहो तो सही है। अच्छा Covenant of the deep. There is no escape. Committed to मैं memory. सोच रहा था कि जो न्यूबिलेट का पीस है वो निकाल के योइनिया को दे दूँ। न्यूब्लेट का पीस है। हाँ मतलब जो न्यूबिलेट का आर्टिफैक्ट है, न्यूबिलेट के लिए जो आर्टिफैक्ट है हाँ हाँ वो उठा के इसको दे दूँ। क्रिट रेट बढ़ाने वाला। हाँ तो वो काम तो कर ही जाएगा, आपके पास पुरीना है ही। इसीलिए सोच रहा था मैं। लेकिन 2 स्टार ही होगा मुझसे, वही पता है। मतलब 2 बोला 6 स्टार हो जाए टोटल तो भी ठीक है मेरे लिए। 6 स्टार ही होगा। 36 पूरे स्टार का मैं भी इतना ज़्यादा वो भी नहीं करता। एक बार कर लिया था बस। Your journey ends. Some target practice. Press your wings and raise it. Busted. Is ready. Let's light it up. 36 स्टार उनके लिए जुरानचू जो मतलब मिलियन मारने के सब देखते हैं। वैसे मेरे दिमाग में उसका नाम नहीं था लेकिन मेरे बोलने के बाद उसका नाम आ गया। इसका नाम Here comes the cat. क्रेका। Everybody stand back. Solidify! अबे ये ऑटो टारगेट बहुत गंदा है यार, मगरमच्छ मारे जा रहे हैं। Stabilize! Let's light it up. Where do you think you're going? वो तो माल लगता है। Gotcha. जल्दी एनर्जी आ। Things are about to get dicey. I'm going in. Solidify! एनर्जी थोड़ा तकलीफ हो रही है। तो कौवे के मरे भी नहीं कितना टाइम ले रहा है। अब फटाफट Dance मरेगी। with me. Stabilize! हम लोग हो रहे Be हैं। a good audience, won't you? ये 12 का सेकंड फर्स्ट हाफ। Busted. Game's up. Fun's over. Teamwork is dreamwork. Solidify! Fire hazard. Filthy outsider. तो इसका तो यूई में वेपन निकाला कि नहीं? नहीं मिला ना। क्यों? उससे तो वो अच्छी बनती है।
अरे वो क्या बोलते हैं, राइडन का आ गया था ना, भूल गए। अच्छा फिर सुनने किया नहीं क्यों? फिर क्या, उससे फिर पीटी बनाने का कोई मतलब नहीं था। फेट 0.1/2 हो गए थे। और वो भी और खत्म गए हो थे गया। नहीं कहाँ, उसके 3 रहते हैं ना, 2 बार हारोगे तब तीसरे में कंफर्म होता है। Quietly now. मुझे अजीब ही लगता था। The तो curtain क्या बनती है भाई ये। falls. अब इसमें भी वो आएगा। हाइपर ब्लूम के लिए टीवी बुलानी चाहिए। नहीं एक्चुअली वो भाग जाता है रूम से। अरे मेरी वाली टीम है तो ऐसे भाई नहीं, रेडन से ज्यादा अच्छा आपको नहीं लगता कुकी मारती है हाइपर ब्लूम? तो राइडन इसकी ईएम भी बिल्ड नहीं है ना। हाँ ईएम है, मतलब वो नहीं बोल रहा, ब्लूम को ज्यादा जल्दी वो भेजती है ऐसा बोल रहा हूँ, जैसे ये परे है ना। इसीलिए तो कोरिना है टीम में। हाँ ये भी ऑटो टारगेट कर रहे हैं। नहीं एक्चुअली पता है वो ब्लूम मुझे भेजती तो है बट उसमें डिफरेंस आ जाता है। जब अपन शायद नहीडा दूर रहते हैं ना। नहीडा के C1 C2 में डिफरेंस आ जाता है। ये शायद ज्यादा वो जनरेट ब्लूम अलाउ करता है और वो भी करता है। Shine down. रेड डाउन से Zuma shines eternal. मार नाजिम पहन के लौड़े को। The Temple of Wisdom. Hold the line. There is no escape. Ha! Everyone hold hands. और हाइपर ब्लूम मसे हो यही शायद से ये डेंड्रो रेजिस्टेंस रहता है क्या? नहीं बे, एनिमो है ना वो। नहीं ठीक है, लेकिन फिर भी कम डैमेज, बहुत दूर है। अरे जो ऊपर के साइड में फिर भी कम डैमेज पड़ रहा है ऐसा क्यों? जब लेटा था ना तो वो इसका डिस्टेंस घटता है। वैसे ये गणमरा है तो सुमेरु का ही। मैं जनरल ने सारे रह सकते उसका जब घटता तब वो कम होता। I see everything. अच्छा गिरा दो सारे एलिमेंट मार दो उसके। वो जिस लेवल पे अटैक करेगा उसका रेस गिरेगा जब नीचे गिरेगा। Illusion shattered. गया गया। वो डेंड्रो से अटैक किया कर जब वो करता है वो तो डेंड्रो रेस जाएगा। उसका वो जो एनिमे कलेक्ट रहता है उसमें लिखा रहता है कि स्वर्ल रिएक्शन करवाओ, तो डेंड्रो का स्वर्ल नहीं होता है ना। हाइड्रो वगैरह डालो तो हो जाता है जल्दी। इलेक्ट्रो कर दिया कर हाइपर ब्लूम के साथ शायद चल जाए। हाँ वही तो, इलेक्ट्रो कह रहे हो ना। आई लव योर कंटेंट, अभी डाल कर हो भाई हेलो। ये वाला कंटेंट यार। ये वाला Solidified. Busted. सेम Let's light it रेस up. वाला शायद। Everybody stand back. Things are about to get dicey. अभी तो स्टार्ट करूँगा, पता नहीं कब करूँ। यही है ना, महीने में एक बार चाहिए। बिल्ड हमने थोड़े से बिगाड़ दिए हैं अपने कैरेक्टर को। हाँ एनर्जी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा ये ऐलान का, अवेयरनेस रहने के बाद भी। वैसे जितना देर तुम गिलान लेके फुदक रहे थे, बेनी गई मार देते उतनी देर में। नहीं बेनी का ही पायरो पार्टिकल जनरेट करता ना, उससे का है एनर्जी तो मिलेगी। कम ही मिलती है। Take it easy. Game's up. Fun's over. Teamwork is dreamwork. Gather. हेलो 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 बॉयज यस। क्या चल रहा है? कुछ नहीं। हाँ ये लास्ट है ना। ये कौन सा चीज़ आया है? अरे इसको तो भाई भिगा दो साले को दुकान में। दिखाने के लिए तो दो दो हैं। Illusion shattered. Commit it to memory. Make yourselves at home. लेकिन ये साला भूल नहीं रहा। महंगा महंगा। देख गया ना? Rest and rebuild. अबे हवा में उड़ रहा है इसके। हवा में उड़ रहा है। पूरा क्यों हवा में उड़ रहा है क्या? Inazuma shines eternal. कौन? Just wait
ये क्रैब जमीन पे नहीं चलता क्या? दिखाओ किसकी बात कर रहे हो? अरे इसकी स्क्रीन पे फ्रीना के क्रैब हवा में उड़ रहा है। लॉल। क्रैब नहीं है वो। क्रैब ही है देख। अच्छा ये जो इसके क्रैब है, फुरीना के क्रैब जो है, हाँ ये तो भाई हवा में उड़ उड़ के मारते हैं, जमीन पे आते ही कब है ये? अरे मैं पानी ऊपर लड़ाई करता ना ये इसलिए देखो मुझे- लास्ट चैम्बर 3 स्टार हुआ। इसका मतलब बाकी के भी हो सकता है अगर ट्राई हार्ड करो तो। हाँ ऐसा ट्राई कुछ हार्ड नहीं है करना पड़ेगा। ऐसा है, ऐसा ही है। भाई, जान चली जाती तो वो किस में मत करो। मैं तो नहीं कर हाँ, मत करना। सुधांशु का हाथ पुल हो जाए। आप तो स्ट्रीमर लग आजा। रहा। 7 बच्चे। 7 हुए 2 बचे। 7 बचे हैं। नहीं 7 हुए 2 बचे। ल्यूवे एक्सप्लोर नहीं किया हूँ, देखो एक दो डो शायद डब्बा उब्बा मिल जाए वहाँ पे खोलने के लिए। अच्छा मुझे लगा कि तुम उसकी बात कर रहे हो यार, स्क्रीन पे कुछ और चलता है बोलते कुछ और है बंदे लोग। वे पॉइंट बचा हुआ ऐसा? अरे हाँ वेपन बचा होगा ना आपका। वहाँ की बात नहीं कर रहा था सुधांशु, नए वाले एरिया की बात कर रहा था मैं। हाँ उसी मुझे लिए। लगा। सुधांशु दूसरे में चला गया ना, मतलब पुराने ल्यूवे में। अरे सारा खोल लिए वेपन। ढूंढ क्या रहा था ना वो। क्या? अच्छा वो। वही। हाँ तो कोई 2 चेस्ट कर वो। लो। हाँ चेस्ट सारी पड़ी है सुधांशु भाई, चेस्ट आराम से कर हाँ लो। तो 2 चेस्ट कर लो कोई सी एंट्री की। वही कर लेता हूँ। उसके पास कर लो किसके, स्टैचू ऑफ 7 के, तो पता नहीं भी तो रहेगा। वैसे जे दबाओगे तो तुमको 30-40 प्रीमो वाली भी चीजें दिखेंगी। लेकिन वो नहीं कर रहा मैं। क्या? क्वेस्ट होगा ना वो बड़ा सा। हाँ उसी की मैं बात कर रहा था। अच्छा मैं बोला छोटे जी, छोटे मैं क्वेस्ट ही बोला होंगे। जी बोला इसने। नहीं नहीं। वो देख 2 चेस्ट आ गए सामने, एक तो नॉर्मल एक सिली भी दिख रही है मेरे को उसके अंदर। हम्म। There's no end to this. Shine down. लेफ्ट में सिली है क्या? Allow me. अरे इसके पजल बड़े बढ़िया बढ़िया है पता है। अच्छा पजल है। बड़े मस्त और मस्त उड़ने है। वाला ल्यूवे में ही आ गया लाइक। There's no escape. वो टीस है ना वो मछली, हाँ मछली जो। Becomes अच्छी है ना लाइक उसमें भी था ही हाँ पहले। अच्छा लगता है। उसका एनिमेशन भी बहुत अच्छा होता है। हम्म। वो ये देखो लोग सिली एक पेड़ के नीचे भी एक सिली है, दिखेगी नहीं? Is एक से this अपना काम हो an जाएगा। answer from this world? अरे नहीं वो 2-3 सिली मिला के एक वो होगा chest। मैंने पता चेस्ट वगैरह ओपन ही नहीं किए। लग्जरी प्रीशियस पता नहीं कितनी ओपन कर करके छोड़ दिया हूँ। पीछे 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 पीछे। 1 मिनट बैठो। पहले इसको अरे ले बहुत जाता ढीले हूँ। है, मत बोलो उसको। अरे 2 वो लेके आने पड़ेंगे। एक पेड़ के नीचे था। खैर अपने को एक अचीवमेंट मिल गया हेलो। हो गया काम। अबे एक और लाना है बस। ले आता हूँ। उधर ही है। मेल मुझसे जा रहा है क्या? पेड़ पे थी बोल तो रहा था परत। नीचे पेड़ यहाँ के नीचे। मुझे एक चेस्ट दिख रहा है फालतू में पड़ा हुआ है। हाँ पे लगाऊंगा किसी को। हाँ यहाँ पर एक क्वेस्ट किया था जहाँ तुम बता रहे हो। Is this an answer वो from this निकालने के world? लिए क्या था, वही जो क्रैप था। क्वेस्ट भी नहीं था, इन्वेस्टिगेशन टाइप का था, पजल सॉल्व करना था। हाँ कर देना स्पेन स्ट्रीमर लग के साथ नए एरिया में। किस पे करना क्लाउड पे ना। नहीं डा बे। नहींडा ये क्लाउड भी अच्छी दिखती है पता है, और नहींडा तो अच्छी भी है। नहीं डा। देख रहे हो राजस्थानी को। हाँ यार। मेरे पास पहले से है वो, मुझे उसको थोड़ा बड़ा करना है। हाँ हेलो। राजस्थानी। हेलो। बेटी बचाओ तुम्हारी सुधांशु। प्रीसियस ही देगा ना साल। नहीं एक्सक्लूसिव देगा। I wonder who this gift could be from. बिल्ले है। प्रेशस के लिए एटलीस्ट 4 लगती है। 3 या 4। बात तो ये भी है। 4 भी नहीदा लगती क्या तो मिल C2 जाता। कर रहे हो क्या मसी भाई। वन हो गया। ऐसे मिली नहीं। तो कितना चमकता है यार ये वाइट। हाँ इसका बहुत ज्यादा चमकता है ना। नहीं चेहरा नहीं, उसकी स्क्रीन भी चमकती है बहुत ज्यादा। देखिए नहीदा कितनी अजीब दिख रही है।
ब्राइट कर रखे हो क्या सुधांशु? ब्राइटनेस मैक्स है क्या सुधांशु? हाँ हम्म, मुझे लग रहा है कैजम वैजम में एकदम चमका भी रखा वो होगा। कंट्रास्ट करना पड़ता है। किधर ग्राफिक्स, ब्राइटनेस, नहीं वीसिंक ऑफ करो ना। बेसिंग ऑन है क्या लॉल। ये सब हाई करो, अच्छा नहीं लगता। हाँ वही, क्या पता कल अटकने लगा था थोड़ा सा। ये बॉस मार देना कोई, कौन सा, वीकली कोई मारने लाएगा। क्या बढ़ा रहे हो अभी? वो मार देना, रेडन, स्कारामूश मार दो बस। स्कारा किसके लिए? जिसकी जरूरत है उसको मरवाओ ना। अबे अच्छा वो ड्रैगन मार दो फिर, ड्रैगन ड्रैगन सुधांशु। ड्रैगन कौन सा है? अरे वो डेंड्रो ड्रैगन, सॉर्टेरर। अच्छा। नार्वेल मार दो ना तुमने, नहीं वो कर लिया, बना ली पूरी। नहीं पुरीना नहीं, स्टॉर्म फुरीना कर, टेरर। सोचा था मैंने भी नहीं बनाई फुरीना पूरी यार, अच्छा याद दिला दिया। पुरीना सपोर्ट है रे, इतना ज्यादा उस पे लोड नहीं लेना मेरे को। जितना उसके पीस मिल गए थे मुझे 2-4 बार करने पे डोमेन, उतना ही लगा दिया हूँ मैं। फिर भी अच्छी बिल्ड है। हाँ मस्त मैं तो डैमेज डोमेन कर आज रही। तक किया ही नहीं उसका। हाँ वो स्पाइरल से मिल गया था। वायरल से नहीं, अच्छा तुम तो एक्सेप्शन हो साले। मैंने न्यूबलेट के ज्यादा मेरे पे नहीं आते किया। थे पीसेस, पता है मैं क्या करता था सुधांशु, मैं कहा, अरे हम्म, क्या चूतिए पीसेस हैं, इनको तो मैं यूज भी नहीं करने वाला। हाँ तो लेवल अप कर लेता हूँ, ऐसा कुछ। नहीं तो हाँ लेवल अप में लगा देता था उन सबको। तो वही तो मैं भी बोला। अबे तुमको हाइपर ब्लूम वाली टीम लेके जानी थी, वो साला ड्रैगन जो स्विंग करके जाता है ना, हम्म, फुरीना के बच्चे वहीं झुका देते हैं अबे उसको। इन्होंने ये भी अपग्रेड कर दिया क्या, क्या कि चीज? दिखेगा कैसे करके विजुअल्स। अब मैं आर्टिफैक्ट अपग्रेड पे जाना, हाँ 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 हाँ। ये अपग्रेड किया गया। क्विक लोड आउट का भी एक नया ऑप्शन आ गया है ना, देखिए कि नहीं? एनएस नेक्स्ट ईयर करके ऐसा। Let's light it up. ये Busted. तो बहुत पहले से है। मैंने नहीं देखा यार, ये लास्ट टाइम ही आया था 4.3 में शायद। मैंने अरे नहीं देखा इसका एरो, Quietly now. एनर्जी, Everybody stand back. Here comes the catch. Fire hazard. ऐसे भाई, मैंने स्क्रीन देखो। मारो तो मुझे लग रहा है वो उड़ जाएगा। उठ गया। हाँ देखो। देखिए हाइपर भी मिला है, हाँ देख रहा हूँ, बता। मुझे यही करने में मजा आ रहा है। मैं तब से तो यही अटका हूँ सही में भी। वो फ्लावर को क्यों नेविगेट करके रखते हो? अरे मैं देखा था फुने का मटेरियल का, तो मैंने कैसे मुझे क्राफ्ट करना है बस पड़ा। ये बकरी है अबे क्या? धक्का, हाँ भाई बहुत ज्यादा हेल्थ है उनकी, मरते ही नहीं देखो साले। भाई धक्का मारते इससे। इसने देखा, आपने मेरे को कुछ नहीं करा था। Let's light it up. ओके पेल के भाग जाएगी तुमको वो। अरे टी क्यों दबा रहे हो, मारो उसको। धक्का नहीं लगेगा। Gotcha. Time अभी for तो a पेलेगी तुमको और भाग जाएगी। अरे इसमें वो क्यों नहीं लगा? डैमेज बहुत स्लो है इनका, बहुत ज़्यादा कम डैमेज है इनका। अरे वो नहीं लगा इस पे, क्या कहते हैं, नहीं लग रहा है। अरे दो वो। quietly now. अरे ट्रेजर रोडर्स का एक सीक्रेट केव रहता है, मैं गया था उधर ऐसे ही घूमते टहलते हुए, खूब पेला उस सालों को। कौन सी वाली थी? अरे वही जब ढूंढ रहा था तभी पहुंच गया था। अरे इलेक्ट्रो डैमेज का मैं भी अच्छा हो सकता, क्रिट रेट भी है। लेवल अप करूं? होगा नहीं, मटेरियल करके देखो।
अभी कौन सा लगा? अच्छा अभी तो ईएम लगा। इतनी सुंदर रेडन मेरे स्क्रीन पे कहीं नहीं दिखती। नहीं, 12 क्या तो करना रहता करना है भी। गाइस? इसको? ये अरे जो वो जो क्या ये रेडियस है ना, ये बस जल्दी जल्दी से उन फ्लावर्स को टच कराना है बस। जल्दी जल्दी। तो इससे क्या होता है? हाँ, हो रहा है। ई मत करो अभी, ई खुद ही छोड़ देगा वो। ई से बस कहीं भी अरे एक जगह आप पे प्लेस हो जाएगा। बस आपने दौड़ जाओ उसकी सारे स्टोरी लोग। कर ली क्या? दो ही दिख रहा है मेरे को नहीं तो। नहीं, मुझे और करनी ई थी। निकालो और दिखेंगे। मेरे सामने मैं जा रहा हूँ स्टोरी करने। पुरीना का ही नहीं कर सकता मैं। हम्म, ई इसका प्लेस कर दो ना पहले वो रे यहीं वो पे। रे वो रे वो रे वो रे वो रे। स्टोरी में क्या बेबी गाने भी आएगी क्या? अच्छा मैं दूर जाता तो बंद हो जाएंगे ऐसा, और मैं इसके पास में प्लेस करूँगा तो चालू हो जाएंगे हेलो। ऐसा। जल्दी जल्दी छुआना है तुमको। अभी मैं नहीं किया हूँ ना, तो ये तो किया ही नहीं होगा बिल्कुल। ये तो अभी गए ही थे लिवे में। इतना टाइम में तो शायद वो फ्लावर डाउन हो जाएंगे। पहले इसका ई कहीं पे प्लेस कर लो, फोरीना का ई चला लो, उसके बाद वो उठाना। या बीच में तुम देख रहे हो वहां पर वो कुछ चैलेंज स्टार्ट करने का कुछ वो करके देखो। कहाँ है? शायद फनी हाँ अप एंड डाउन जहाँ टर्टल है। नहीं देखो ना, आप बोल रहे हो ना तो मैं नहीं नहीं, करके देखता हूँ एक बार। टर्टल के बाजू में कर रहा था वैसे मैं, बट कोई ना। अब दौड़ जाओ फटाफट। अरे ये तो यहीं से साल चालू हो रहा है, मेन लिवे से। मुझे लगा था दूर से भाई चालू ये तो होगा। वहीं चीटिंग है भाई। चेस्ट के लेफ्ट में देखो, ये जो खड़े होने के लिए था। हाँ तो क्या था इस पे? इससे तो मिला मुझे वो। We've been अच्छा, to इससे वो so मिला था many तुमको। places lately. What हाँ do you say we take a day off कुछ from तो होना चाहिए adventuring था and इससे। just find somewhere nice to relax? क्यों था ये? Let Paimon think. इससे वो स्पॉन हुआ What था जब are मैंने टी some पकड़ा था nice ना। places we could अच्छा। go? Oh, why don't we pay Cloud Retainer a visit at MAONO? It's been a while since we last saw that illuminated bird. She's इसमें always इसी the one टाइप के popping पजल आए up पता out of है। nowhere and जैसे ये scaring us फ्लावर था, half to death. पहले तो ये फ्लावर वाला पजल है। हम्म। उसके बाद एक होगा कैसे छोटे छोटे स्टैचूज रहते हैं, उनको पिक करके वही टी से। एक ऐसे उल्टा झुके खड़े नहीं रहते, नहीं तो फिर कोई You ऊपर still जाके। remember the first time we came here? We even brought सुने, offerings and everything. जैसे हाँ ही फ्लावर And when we उठाने का था told her वैसे ही that कुछ Rex छोटे छोटे Lapis had been स्टैचूज रहते हैं, assassinated, उनको उठा के she उनकी सही जगह पे immediately प्लेस करना threatened to रहेगा। squash Liyue दूसरा hard. ये I पजल आया है। probably don't need to तीसरा bring any offerings एक now that वैसा we've ही gotten to स्टैचू know her रहेगा, pretty well, right? उसमें से एम करके। एक मिनट, मैं जा रहा हूँ अलग ही स्टोरी करने। Here somewhere, so if she really wants मतलब something, we can just use that. उसमें आवाज से नहीं आ रही ना? Traveler, ओके ओके did ओके। something catch your eye? Whoa, what a pretty lady. Is she also here to visit Cloud Retainer? ये खुद ही क्लाउड रिटेनर। Yeah, you're right. All it takes is one look and you can tell she's someone special. As expected of that bird lady, really. She must have a whole bunch of Adepti friends from all over the country. Okay, but if we're both friends of Cloud Retainer, then we're basically friends by association, right? Want to go up to her and say hello? Helping you make more connections अरे is part of Paimon's job वाह। as your reliable guide. Paimon's got this. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. Paimon doesn't think we've met, but we're also friends of Cloud Retainer. May we have the pleasure of learning your name, Madam Adeptus? You two. What is this tomfoolery? Has this shift in form so clouded your eyes that you no longer recognize one anymore? Wait, you're... Huh? You're the illuminated bird? इल्यूमिनेटेड बर्ड। Human! Oh, donning human form is scarcely any test of one's abilities. As for your confusion, one merely had no reason to indulge such inclinations. So, you're indulging now Well, one has made plans to pay a visit to some disciples at Liyue Harbor. Taking on a human form for such a trip is simply a way to make matters less conspicuous. You? Worrying about keeping a low profile? You're the one who likes to
not bring that up unless she asked. Oh, so you have taken care to follow the proper rules of etiquette after all. Most commendable. क्या लेके आई मतलब? Well, this is all Paimon's got. You don't mind, right? One has never found oneself lacking in basic comforts. On the contrary, it is the gesture that one values above all else. So long. That kinda makes Paimon feel a little guilty for trying to keep them for herself. Anyway, where were we before? Ah, right. So by disciples, you must mean Ganyu and Shenhe. It's also been a while since we last. One planned to extend the invitation even if you had not raised the matter yourself. Shenhe and Ganyu should be quite pleased to see you. However, one would first inquire as to the reason behind your visit here. You have cause to seek one's company? Yeah, we just found ourselves missing you and wanted to see how you were doing. We were hoping you'd tell us one of your stories. Who knew we'd run into your human form while we were at it? Is that if there are no urgent matters at hand, then let us make haste for Liyue Harbor. Sounds great! Then let's all go to Liyue Harbor! Nice. Ganyu has been quite busy with work as of late. One can count on one talon the number of times she returns to Mount Outsong each year. Shenhe has also secured employment recently. In her correspondence with me, she wrote that she shall have no need to return for the foreseeable future. Ganyu और Shenhe. गान्यू लेके ही चलते हैं। मान ना जाए कहीं। क्वेस्ट में अधिकतर यही होता है। We're almost at Weihai Pavilion. Hey, do you think Ganyu will be shocked to see Cloud? Guess we have no idea if Shenhe and Ganyu have ever seen her in this form before. Wait, where did she go? Why are you just standing there, Cloud Retainer? Quietly now. One shall stay here. You two can go and meet with her. But why? Isn't it better? If one were to proudly proclaim one's presence, Ganyu would surely profess herself otherwise unoccupied and drop everything to attend to one's visit. One fears that would only result in her staying up all night to make one does not wish to trouble her. Conversing vicariously via you two shall... Fair enough. Makes sense. Alright then, we'll just pass on your regards and... Cloud Retainer? देख लिया गान्यू ने। Is that lady someone you know, Ms. Ganyu? She is indeed. I'm sorry, Huixin, but could we delay the upcoming meeting for a little bit? I believe my schedule today is quite full. Although, perhaps I could move some work to later in the evening. Oh, not to worry, Miss Ganyu. I'll make the necessary arrangements. Thank you, Huixin. गान्यू को दिन भर काम करवाते हैं ये लोग। It's been a while, Ganyu. Greetings. What brings you here today? And Cloud Retainer, too. It's been quite some time since I last saw you in this form. You are quite mistaken. One is not acquainted with this Cloud Retainer of whom you speak. One is simply a mere mortal passerby. Seems she's not buying it. That was सोनू, but a simple test. हाय। One did और not बताओ क्या expect you चल to रहा be है? able to recognize one so easily, especially after so many years of only seeing one's other form. But recognizing you is, my responsibility as your disciple. An apt one was simply passing by while attending to some important business. One thought it would only be fitting to pay you a visit while in... Wait, Paimon wasn't aware of any important... Cloud Retainer's right! We've still got something
super important to do, so we can't stay here for too long today. Oh, is that so? But it's been so long since we last saw each other. One simply desired to see you and had no intention of interrupting your work. A quick conversation should suffice for today. A more involved reunion should wait until you find yourself less occupied. Nothing like anything Micromax away. किधर से सीखे हुए. While one acknowledges the amount of work that you have to deal with every day, one must Full. also remind you to rest. Though adepti blood flows through your veins, excessive exhaustion will still cause grave harm to your body. It still makes one nostalgic to see you as you are now, respected and independent. When you were young, you oft begged one to cuddle you to sleep when you suffered from nightmares. Cloud Retainer! Stop! If you insist. We are running short on time regardless, so one will refrain from going into each and every story. Why don't you continue your conversation? One shall simply stand by and listen. अबे ये जब आती है गानियों की कोई सीक्रेट बता We've been देती to so है. many new places since the last time we spoke. If you ever need anything, please just come find me at High Pavilion. Also, forgive me for my presumptuousness, Cloud Retainer, but if you plan to continue appearing in this form, don't you think it'd be helpful to adopt a human name? A human name? अच्छा हाँ, इसका नेम. Valid point. You really think so? Not that you're not famous or anything, but... You presume to know the extent of one's illustrious achievements. One would hardly think such a thing to be possible. Nevertheless, Ganyu's advice cannot be ignored. Canyon? I assume that's a reference to the full record of Pristine Pavilion. An adeptus of years past would rise with the clouds and rest with the moon. They were enlightened and wise. Oh, that sounds super cool! Paimon feels like only the most powerful of adepti could rise with the clouds and rest with the moon. Actually, those lines were originally written to describe Cloud Retainer herself. Huh? Wait, so you're really that powerful? And what of it? Did you truly take one to be nothing more than a bird of bigger than average size? Not exactly. To be fair, Cloud Retainer rarely speaks of her past accomplishments. The tales of her... It is said that although I did not live through such tragedy, simply reading about it is enough to gain a visceral... On top of the drought, a noxious gas also began to spread through the land. If not for Cloud... The books had this to say about what happened. Upon arrival, the Adeptus borrowed the wind to retain the clouds. Immediately, the clouds gathered together, and abundant rain burst forth from the heavens. Wow. That's incredible! Mortal records add embellishments to dramatize past events. One did merely with one ought, and even if one had not interceded, the other adepti would surely have stepped into... Even so, you stopped an entire drought! Can you really control the weather like the book said? Oh, Paimon suddenly has a lot more respect for you. So it was Paimon's bad for calling you Illuminated Bird before. You're not too mad. How laughable. A name is but a simple label we carry with us on our journey through the world. Why would one be offended by such a... That's a relief. In that case... Well, that is quite enough ancient history for now. Ganyu, have you had word from Shenhe? One has heard that she procured a job recently. Have you any thoughts on her workplace? Moreover, does she find herself overly inundated with work? Is she allowed time off during land? That is a lot of अरे questions. लैंटर्न राइट की बात चल रही है. There is no cause for concern, Cloud Retainer. I introduced Shenhe to her employer personally. Wanmin Restaurant's business has been booming recently. So, with Chef Mao being swamped with customers... I see. Most excellent indeed. One has had the pleasure of being introduced to that family. Huh? Can that... You may return to your work, Of course, Cloud Retainer. Please, take care. Traveler, Paimon, I'll see you... See you around, Ganyu! Paimon was pretty quick on the uptake there, don't you think? As soon as you mentioned important business to attend to, Paimon सैने
यहाँ क्या करते थे याद नहीं आ रहा। No, in fact, it was not an excuse. अच्छा यहाँ है सैन्य। You get what I'm saying? Yeah, how can I not? Not even fine food is enough to distract from the presence of a fine lady. Oh, I'm far more interested in getting her details than ordering any dishes. Hey, You do it. no. I think you should. Wait, she's coming. What can I get for you today? Greetings, miss. I was just wondering if you'd be willing to... What would you like to order? अरे भाई 2 servings of more meat to go. Good chat. Bye. लाल वे डर गया बच्चा। Welcome. It's been a while. May I take your order? Don't welcome us as guests and greet us as old friends in the same line. It's weird. Mm-hmm. Oh, and this This is Miss Xinyun. master? One does not recall ever revealing this form to you before. How were you able to ascertain one's true identity with... I've trained and lived with Master for more than 10 years. I would recognize you no matter what form you take. Is something the matter, Master? Hardly. One simply learned of your employment from your letter and came to check on your well-being. And check out the great food, too. Indeed. It's almost lunchtime. My apologies. I'm still on the clock and can't talk for very long. Well, if it isn't the traveler in Paimon. Are you here for Shenhe? The lunch rush isn't in yet, Shenhe. So, I've got things covered for now. Go ahead, sit down and enjoy some time with your friends. I'll let you know if things pick up. Thank you, Chef Mao. ओफो It is just as one expected. The owner of Wanmin Restaurant is indeed a most reasonable and accommodating human. Still, the work here entails dealing with quite a varied group of people. Has this been difficult for you, Shenhe? It's been manageable so far. I sometimes run into strange people, but I have figured out a way to deal with them. Seems like you've been making progress. So by dealing with them... You mean First, I try to talk sense into them. If that doesn't work, I threaten them with violence. At this point, they usually decide they are in favor of a civil Oh, how should... Oh, a sensible plan. One is gladdened to see you integrate so well into human society. And you, Master? How have you been? Simply marvelous. Though Mount Outsong has scarcely enjoyed your presence recently. I see. Just as I have missed Master quite a bit too. Even though work has been busy lately, I've already had a conversation with Chef Mao. Oh, you did? Do make note of such matters in your letters in the future. Whoa. Her mood shot up just like that. By the way, Master, since you are in Liyue Harbor, have you had the chance to visit Ganyu? Indeed. She is similarly preoccupied with her work. There was time only to Ganyu told us the story of Cloud Retainer's name. It was amazing. We never knew how powerful she was before. I see. In that case, allow me to also share a story about Master's past. Oh? Is that a problem, Master? I believe this to be a good topic of conversation. No, not a problem. One was simply caught off guard. But no matter. Please, proceed. One is most curious to see how much of one's own conversational prowess you possess. Master once participated in a race against Mooncarver. After Mooncarver lost, he insisted that Master's ability to fly gave her a natural edge in such a contest. In response, Master agreed to forego flying in return for being able to use one of her devices in the race. Mooncarver accepted, only to find Master with a brand new device on the day of the contest. Huh. What kind of device? It was a mechanical vehicle made out of iron. What was it called again? Oh, an
electro-powered... Oh, you refer to the bicyclical Thunder Flashmobile. One spent 49 days conceptualizing and crafting it. It need only be infused with adeptal energy, and it can cover thousands of miles in one day. Oh, it boggles the mind why Mooncarver ever supposed he might best me in a contest of locomotion. Alas, the one flaw of my mechanism lay in its weakness against mountainous terrain. One was thwarted mere seconds from victory, when it was ये thrown खुद off को course 1-1 क्यों and बुला failed रही to है make it बार बार? across the final stretch. Truly a most unfortunate turn of events. Anyway, do go on, Shenhe. Master, that was the end of that story. Is that so? Huh. With you gone, one has seldom felt the desire to call upon... Have you been lonely, Lonely? Huh. At one's age, entire human generations come and go in the blink. 'Tis a most foreign sentiment. The mere mention of it is preposterous. What is the reason for that look upon your face? It's nothing. It's just... Well, Paimon gained a lot of respect for you after listening to that story. I was just a little bit confused. Which one of the two is the real Cloud? To me, they are both, Master. Huh. This is not to say that... She got, like... Do you have any empty tables? Hey there, could we get another... I'm hearing more guests come in. I should get back to work. Alright, good luck with the lunchtime. Mm-hmm. So much yummy food! Paimon's gonna feast! One is fond of all kinds of delicacies and delights, and the dishes he... Everything's so tasty! A bit too hot at times, but still super tasty. I'm sorry, miss, but our tables are full. Shall we try somewhere else, Granny? But it smells so delightful. Can we really not eat here? My poor legs can't go on from... Well, you could always check with some of the other guests and see if anyone's happy to share a table. Okay, I'll ask around. Excuse me. Would you mind letting us share a table with you? There are no empty tables left, so... Well, Paimon doesn't mind. What about you guys? कोई माइंड नहीं करेगा, आके खा लो. Great! Thanks so much. My name is Shuyu, and this is my granny, Yuendai. Granny? Yep. Is there something wrong with that? No, Paimon's just a bit surprised. She looks so young. Yeah. A lot of people compliment Granny on her youthful looks, but she's actually much older than she appeared. अरे ये क्लाउड को पहचान जाएगी क्या? Granny? Why don't you take a seat? Come on. Huh. Have we met before? No. Anticipated meeting, then. Please, take a seat. What would you like to eat, Granny? I can order for you. I want braised earthworms. They always pop up out of the ground after a rain. What? No, not this again. Granny, there's no braised earthworms on the menu. Braised earthworms? Well, that sounds weird. Do people actually eat that? Right, that's what Paimon was thinking. Need any help? Help? Oh, do you mean with Granny? Thanks, that's nice of you to offer. Granny has pretty bad dementia, so her memory's getting... ये इसकी आवाज नाहिदा जैसी नहीं लग रही? Things that sound kind of confusing. Actually, her memory's been bad ever since I was little. But it's gotten so bad lately, सी लग रही I है. even have to remind her who I am every morning. They died young. It's just me and Granny now. Oh, but it's okay. Don't feel bad. Granny loves me a lot, and I love her a lot too. Wow. You're really tough for your age, kid. You're too kind. And me? Oh, what about me? You're tough too, Granny. Plus, you're really gentle.
And you're always there for me. Yes, and it's hardly as if I forget everything. I still remember the important things. Wait, what? Ah, I remember now. It was a dream. I had a dream where everything was dark. Someone was standing in front of me. She told me to come and find her, NPC and that once I'd found her, मतलब I would be free. Huh? That sounds super अरे आ important. तो गए But how come you've never told me about it before? It was हेलो just a काय का dream, NPC so भाई I forgot about it. म्यूट I कर am in a लियो, good गाने mood चल रहे now, हैं। and वो तो somehow कर I लियो remembered it again. अरे उसे बोल रहा हूँ, अभी एक सीन में आया था, पीछे लड़की No, बैठी हुई थी। I believe अच्छा I've उसकी had this dream a great many अरे times. सुधांशु मस्त मूवी है, But तुम भी बाद just में how देखना, ठीक many है? times I रॉकस्टार ना had it, हाँ देखना है that I देखना do not स्टार्टिंग में remember. गया रहता है दिल तोड़वाने, फिर So पूरा you have a आखिरी तक उसका दिल reoccurring dream टूटता where है। someone's talking to you? That sounds spooky. अरे इसकी भी स्टोरी अच्छी है इसकी तो अच्छी है, अभी लास्ट में बहुत कैड़ा कट सीन आएगा, देखना सुधांशु। खैर Unlikely. तुमको ये बताओ, पहले Her थंबनेल eyes are बनाने का clear टाइम नहीं and मिला her था क्या? breathing खुद भी पेल remains के डाल calm and दिया है। level. One sees no signs of क्या possession. बना Are you sure? साला आपने ही थंबनेल नहीं देखा है। Who do you ध्यान take नहीं me दिया अभी for? रुको Is देख one not an adept? Am I not अच्छा an ये वाला expert? हाँ ऐसे ही बनाया था You're right. Paimon almost forgot you're the बना expert. लेवा करो एक ठो। In that case, Not anymore. Although, I have a sense that she looked... a younger version of Granny? This is just getting weirder and weirder. What is going on? As one said, fate must have brought us together. You may leave the... थोड़ी Are माल you तो लग रही sure? है। So, what are your names? Paimon's Paimon. Just Shenyun is fine. Thank you all so much for offering to help. But first, कितना है? I'm sorry for asking, but, ना how do you want us to pay you Four? back? Oh, we don't need any payment for this. क्या को मिला दी? Thank you, welcome. But Miss Shenyun, what exactly can we do to help out this group? All we have to go off is नहीं that मत मिलाओ, dream. ये पूछ Where लो do we कौन start? That is elementary. Since her dreams portray her younger self, then we shall retrace the steps of her youth. Once we have revisited those places, her memories will likely return. Sounds like a plan. एक So, मिनट। Granny, do you remember which places you went to when you were young? Why, of course I do. The heavens above, the earth below, अबे यार the wispy clouds, and the emerald mountain streams. Okay, taking that as a no. पायमन बहुत वो है भाई Might have an idea. Once, when I was really little, my dad told me that Granny used to be a martial artist heroine who saved loads of people from a disaster. If it's true, then maybe they wrote about it in the history books or something. A martial arts heroine? Oh, Shinjo knows tons about Liyue's chivalric traditions. अरे सिंचू भी आएगा क्या Heroes of the past? It's him. अच्छा हाँ इसको भी तो नए But I'm still... I'll go order some food. आउटफिट Granny. मिला है If ना there's nothing on the menu you especially want, I'll just get a few different things. It seems we must part ways for now. The Traveler and Paimon are bound for the Feiyun Commerce Guild, while Yuendai and Shuyu shall remain here and partake of their lunch. As for myself, I have matters to discuss. Street word rambler? Oh, you mean Madam Ping! Precisely. Let us meet at Yujing Terrace once you are ready. मैडम पिंग The food is unbelievable. Next on the agenda. We're way behind schedule. शूटर का लोगो देखा, सही लग रहा है। शूटर भाई ने बनाया ना थंबनेल ना It's you two. थंबनेल What नहीं, brings you here? चैनल का लोगो देख, सीन दे दिया। अच्छा चेंज किया मैंने नहीं देखा हाँ वही थंबनेल में जो है ना, वही लगा दिया उसमें जूम करके। अच्छा नाइस
सही लग रहा है। That's not a whole lot of information ये to उसकी go off तरह of. लग रहा है, स्नैक्स है ना I एक don't बंदा, know if I पबजी can को say खेलता है for स्नैक्स गेमिंग sure. करके, कुछ वैसा लग रहा फेस। I can't pinpoint her identity from your description alone. पतला सा कर दिया ना इसमें, कह रहा है But इसमें। Nameless heroine? that's right. The novels often speak of a great drought from 50 years ago. As the people suffered, a nameless heroine appeared and began to clear away evil spirits and bandit camps. All they knew was that she always acted alone. Later, though, she supposedly fell in love with a similarly noble-minded exorcist from Mount Tianheng. They were well matched in more ways than one, often fighting together मुझे as इस a गाने की fearsome एक duo लाइन of निकालनी otherworldly कॉलर ट्यून strength. के लिए मिल ही नहीं रही है। After the drought ended, the heroine and the exorcist left the public eye and began the way this nameless heroine faded from fame into obscurity later in life. Thanks a lot, Shincho. We knew it. It's nothing at all. Just something I came across while reading. I did do a bit of extra research on her story, but it was just out of personal curiosity. Well, Paimon still thinks that's super cool. Oh, wait. Shincho, if you've read up on her, do you know of any places often associated with him? Let me think. In the novels, the nameless heroine always appeared near one of 3 places. Wangshu Inn, the area just... Perhaps the real-life heroine who inspired the character was also... It's rare for a chivalric hero to fade into obscurity. I've never understood why someone would go to such lengths to erase themselves from public... We'll be sure to tell you if we manage to uncover the truth. That's a deal. Perhaps. Paimon feels like we just learned so much from Shincho. A drought, a nameless heroine, a life of seclusion. Wait. Oh, right. There's a drought in this story, too. Shincho, are droughts super common in Liyue or something? Well, so while droughts do happen, the crops withered. That sounds awful. Yeah. And still, as terrible as they say that back in those days, अपन थे ना। disasters were both more अरे severe नाइट and मार्केट आया, more देखा common. क्या तुम लोग में से किसी ने? Only the streets do नहीं, have any other... अभी ऑन अभी करूंगा देखा थोड़ी देर नाइट बाद। मार्केट। Back and meet up with Miss Xianyan and the अरे यार वैंडल एक भी अच्छी नहीं आई मेरे को। See you some other time, Shincho. It's no problem at all. गाया की चलो, गार्डियन आई है, वो ले सकता हूँ 1000 उसकी वैल्यू पॉइंट की। सही है। Next on the agenda. बना gitu तेरा बना itu अपन तेरा मेरा दिल बना अब दिल बारा अपन gitu हमें बस तुम्हारी आवाज आ रही The है। tune that you requested. I hope it will be of help to you. मैडम पिंग। Thank you. Straight word, but Ping, what has amused you so? Oh, it's no serious matter. I was just reminiscing about the last time I saw you in this form. Time has wrought such change. Time has little bearing on one's existence, nor has one keenly felt its effects whilst dwelling at Mount Outsong. Oh, why so formal all of a sudden? I must say, you're making me a little nervous. What is it? Well, the inquiry is approximately how much more would one need to afford a comfortable life in the harbor, not unlike the one that you yourself lead. It does not require as much as you may think. Still, do you mean that... Cloud Retainer, Madam Ping! What... Nothing save for some trivial matters. ये यहाँ रहना चाह रही है क्या? Have you unearthed any useful details? Shincho has a theory, but let's save it for when Chuyu and Miss Yundai have joined up with us again. Do not be troubled, young lady. Here, have some tea. Thank you so much. What do you think, Chuyu? Does it match up with what you know of your granny? According to the story, the nameless heroine eventually fell in love with an exorcist from Mount Tianheng. Maybe that's my grandpa. I don't have many memories of him, but
There was this one time I found a box in our attic full of a bunch of weird sigils. I think so too. Granny might remember something once she's returned to a familiar place. What marvelous tea. It's as if I was taking a stroll in the mountains. Is that so? Then please drink as much as you like. There's no need to hurry. At our age, it's always... Thank you. Okay, since we have the time, can I ask you something? Sure thing. What would you like to know? I have a secret I want to tell you. कौन सा सीक्रेट? What's wrong, Shu? Well, I've been kind of meaning to ask ever since we started talking in the restaurant, but are you guys all adepti in disguise? Oh! How about that? Well, you guys just seem super special. Plus, I think I might have heard Miss Shen call herself an adeptus. Must have been a slip of the tongue. Shen Yun, since you were the one who, misspoke, maybe you can explain to Shu here what you really meant by... One is indeed an adeptus. Is that of some concern? ये बता दिया डायरेक्ट. Well, one time when I was a little kid, I saw a pure white illuminated crane. I had this super high fever, and Granny wasn't around. I was feeling all icky. She put me on her back and flew me to her cool adeptus house and fed me some sort of magic potion. I really wanted to thank her, but so I just kind of wanted to ask if maybe... A pure white illuminated crane? Have you ever met one that's pure white, Cloudbertine? Never has one met an adeptus with such features. One surmises such a description is but a hyperbolic embellishment that oft results from narrative. That's weird. Was it really just a dream then? Well, even if it was just in my head, it doesn't matter that much anyway. All I really want is to help Granny recover her memories. Leave it to us! Now that we know the 3 locations, let's go to Wang's... Okay. Zoom in. पहला लोकेशन ये हुआ. टाइम क्या हो गया? 10 बजे ना. Wangshu Inn. Do you remember this place, Granny? Yes. The fish here is very delicious. And if you look out into the distance, you can always spot a bird that's been left behind by its flock. I believe I'll come with. Hyman's still having some trouble understanding what she's talking about, but if she's so familiar with this place, that must mean she lived here, right? अबे साहब डरा देता है भाई तो. Human presence and decided to come take a look. If you're here, then there's likely no trouble afoot. I suppose there's no cause for concern. It's been a while, Cloud Retainer. I see you have returned to your previous form. I have indeed. I fought alongside her in this form on many occasions during the Archon War. Oh boy. Wow! What was she like during the war? Oh, wait, let Paimon take a guess. Was it anything like this? Behold, the glory of one's newest invention, the Bang Bang Continuous Fire Mechanism. Hands up and surrender, or be prepared to face the full might of the Adepti. अरे भाई. An impressive imitation. Paimon knows her all too well. Even so, Cloud Retainer was not always as ostentatious as you describe. You may be unaware, but her talent with Adepti sigils is just as formidable as her skill in the Archon War reached its peak after Guizhong's death. The Cloud Retainer who fought beside me in those devastating battles was taciturn and solemn, only speaking when she had to activate her sigils. A Cloud Retainer who barely talks? Paimon can't picture it. But what happened after that?
If you were so powerful in your human form, why did you decide to take up your bird form? Once one had bid farewell to the world of mortals, what use would one still have for such a shape? When dwelling between mountain and forest, away from the struggles and troubles of the mortal world. After the war, Cloud Retainer retired to Mount Outsong, only revealing herself to the occasional visitor, and always in her avian form. Although I do believe there was an occasion some 30-odd years ago, when she decided to don her human form. One believes there is little need to relive bygone matters. Granny, are you okay? Back then, at this place... Perhaps this conversation should end here. I shall take my leave now. Should you encounter any trouble, you need only call my name. However, given that you are traveling with Cloud Retainer, I trust you are in good hands. हाला ये कब आ जाता है कब चला जाता है पता नहीं. Granny is finally beginning to remember her pet. Slowly now, calm your mind and recount. A long time. Huh. So what Shinjo said was true. You did fall ill. I don't remember. I'm very sorry, but I can't even remember the name of my illness. I was confined to my room in Wangshu Inn, where I spent many days unconscious. I'd come to every once in a while and stay. One day, I met a traveling merchant. Upon hearing of my illness, he sold me a bottle of soul-revitalizing tea pills. He told me that the pills were concocted using Adepti blood and could be used to alleviate my symptoms. Sure enough, I made a full recovery. Wait, but if your illness remained dormant for several decades, are you saying that what you're going through now is just a relapse of what happened all those years ago? And it was all thanks to the pills that you managed to keep the symptoms in check? Paimon's... I'm sorry, I don't. Hey, you're not useless. You've done so much for me. Watched me grow up. Raised me. Oh, fret not, dear child. Granny was just a bit frustrated. The recovery of a person's memories is a gradual process. Finding peace. Next location. There isn't real... After all, if... चलो नेक्स्ट लोकेशन. अच्छा 3 सीक्रेट्स भी हैं, बट उससे पहले मैं 5 मिनट कहीं जाने वाला ब्रेक लेने. मैं आया 5 मिनट में.
एक मिनट, आवाज तो आ रही है ना? हेलो हेलो। बात। It's so nice to de-stress. We're way behind schedule. Whoa, why are there so many treasure hoarders here? Guess it's time to round up some bad guys. The hunter becomes. Do you remember anything about this place, Granny Linda? Let me think. I feel like I've been here before, but I got it. Wait a second. If I remember correctly, I believe I brought... Ah, yes. I brought some sweet snacks with me. नेक्स्ट यहाँ Go on, take some. You need to eat a lot if you want to grow big and strong. Oh, thank you. Then Paimon will help herself. क्या हुआ? I don't remember this place at all. Still, I was... Huh? मैसेज क्या की I'm हो? not sure. Maybe it's because... क्या हुआ? अरे अभी मुझे ध्यान आया, ये जो तुम डीपी के बारे में बोल रहे हैं ना मेरी, कि मैं चेंज किया, Not here then. ये मेरी पहली आईडी है। जाएगी ये नहीं? पहले वाली बाय क्या? बाय। क्या हुआ तुषार भाई, फिर चले गए क्या? हाँ, थोड़ा वो करता है, फ्लक्चुएट करता है तुषार। अब सुधांशु भाई 2-3 दिन कम से कम इसी मूवी का गाना सुनने वाला हूँ मैं। क्या हुआ बसिया? तुमको क्या हुआ? एक गाने मतलब 2-3 गाने में ऐसी ऐसी लाइन है, मेरे रोए खड़े हो गए साला। मैंने भी सुना था बहुत अच्छी मूवी है, बट मैंने देखा नहीं था। मूवी देखते हुए जब गाना सुना ना, गाना और तगड़ा फील हुआ। हम्म। वो जो कुन फाया कुन वाला सॉन्ग नहीं था, हाँ, उसमें इतना तगड़ा एक्ट किया है भाई, बाप रे। ये भी कोई एडेप्टी सी लगती है बूढ़ी। Did you remember something, Granny? हमें मंजूर है उसका एडेप्टिस होना। It was a moonless night. I had been injured, so your grandpa was supporting me. We fled together अगर with some शैतान भी होती being तो in मैं the इसे fog एक्सेप्ट कर behind लेता। अरे रुको मत, ये बॉलीवुड स्टोरी बनने वाली I है। had exhausted my strength when the labor pains came on, so we took refuge in this house. Your grandpa set up a barrier गाइस बारिश outside, हो रही है, but चोद दो। neither of us अरे knew मसिया the भाई। monster's back. I remember that night. I remember falling to my knees, reciting a prayer over. I alone am the source of this sin. Sin? Oath? Did you do something wrong? I don't know. I don't remember.
I only remember praying in the darkness with all my strength until the sun finally rose again and गाइस the fog बैकलेस cleared करना है out. इसको Eventually, the house was filled with the sound of my baby's first cries. बैकलेस पहना है बे That इसने baby तो was your father. I remember I clutched him tight to my chest and wept tears of joy. या तुम It म्यूट ही हो wasn't my जाओ dad. He was my बहुत pride and बोलते हो joy. And so are you, Shuyu. You're so much like him, and I love you both, but you're always going to be different from me. I don't care what you might have done, Granny. You'll always be the person I love more than anything. You're too sweet, Shuyu. ये बच्ची की आवाज मुझे नहीदा जैसी लग रही है। Alright, let's not stand around. If one recalls correctly, the next place should be Qingyu. बच्ची के अलावा इसका लास्ट वाला कट सीन मुझे देखना है उसी का वेट में कर रहा हूँ लगा देना इसके बाद। हेलो। ये लाइन है पॉप I may be a bit slow, but I'll do my best to keep up. I'm sorry to keep everyone waiting. Climb on. I shall carry you to the top. Oh, such lightness of weight. All those who grow old grow frail. अभी देख के वही खत्म किया हूँ But fine, does this place feel familiar to you, Granny? Let me see. अबे क्या लग रहा है? Strange. Have I? When we were at Wangshu Inn and the abandoned house earlier, though I couldn't remember everything, I still felt a sense of but here, I don't have that feeling. तुम कौन सा लगाने के लिए कर रहे थे Perhaps I did come here in the past, but it just didn't leave. साडा कितना अच्छा नहीं था अरे इसमें वो beats high है Yeah, that's true. But they're also the only thing Paimon was hoping. I'm sorry to disappoint you. It's alright. We're not going to give up yet. We'll figure something out. Thank you. Huh? That way. What's that mountain? Oh, let Paimon look! Huh? Isn't that Mount Outside? वो भी अच्छा है, Looks like we've come full circle. Mount Outsong. अरे ये दोबारा यहीं आ गए। याद आ जाएगा क्या इसको? Are you okay? Don't push yourself, कौन है Granny. ये It's okay. वही तो पता करना है। You shouldn't do Mount Outsong. ईटा मारो सर Mount पे Outsong holds some familiarity to you? It does, but ये भाई Are you feeling unwell? my head. It feels all heavy and dizzy. What is wrong with? Cloud, Miss Yenyun, is there anything you can do? Let us go to Mount Outsong. But Fret not, all will be well. You and I, you have already given more than enough to the pursuit of this. You may leave the rest to me. I've prepared something that can aid you in suppressing the fear in your heart. wait, really? I never leave anything to chance. All will reveal itself when we arrive. अरे नाइस, जाने का रास्ता भी बना के दिए हैं लोग। इसके पूरी प्लेलिस्ट ही लगा दो ना रॉकस्टार मूवी की, सारे गाने लगभग अच्छे हैं। ओक्सिस तीसरा कहाँ है? Beautiful treasures are a cause for great happiness. Come on, just tell Paimon already. What's the... Here. Huh? Precisely. It periodic soothing at Oh, we could have come to... how preposterous. We Adepti can only help those who first resolve to help themselves. Paimon thinks she gets it now. As previously mentioned, a gentle adeptal tune is required to take full advantage of the Oh, Paimon can feel what you mean. Paimon's body feels light as a feather. It's as if she's lying down on a warm patch of grass.
after a super satisfying meal. And you and I. Is the mechanism helping you to relax? ये लगा देता हूँ. It appears she has already सारे तो नहीं succumbed to mix the होंगे. depths of reverie. Come. अरे जल्दी याद आ जाए फिर पता चलेगा ये है कौन. Drought is over. But why do you look like you want to cry? आ रहा है याद आ रहा है. The potion. I've never regretted meeting you. Not even for a second. शवानी के दिन याद आ रहे होंगे. Please, no. Have you forgotten? This is the world you left behind. One of gentle breeze and morning dew, perfectly straddled betwixt the realms of heaven and earth. This is your home. This is where you belong. You should have never left. The you of the past. अरे ये थी क्या पूरी वाइट. अच्छा तो इसी ने बचाया था अपनी ग्रैंडडॉटर. So that is the truth. No wonder this place is so familiar. Granny! Granny, are you okay? Cloud Retainer. Your memories have returned. Wait, did you just call her by her full name? You already knew each other? Yes. I now remember everything. Granny, please don't cry. Oh, don't worry, my dear child. Granny is fine. I'm so sorry, everyone. You've gone to so much trouble on my behalf. It's all come back to me now. The most important thing that I had forgotten was the truth of what I once was. One can sense the guilt that now plagues your conscience. Yes, सही लग रही है भैया. Claiming a Cloud truth Retainer ना. buried is sure to come with a myriad of complex emotions. देखा आपने बोला तब ध्यान गया मेरा. It's okay. Now that I've remembered, I must face my memories head on. Shuyu, everyone, I cannot thank you enough for all your help. अब स्टोरी पता चलेगी. I'm ready. Please, Granny, don't force yourself. What happened in the past doesn't matter. I know, dear child. My feelings for you are exactly the same. Some time ago, I made a terrible mistake. Is this the sin that you mentioned in Dwayun Karst? What? I am, in truth, not a human being. My real form, one that I held for centuries, was that. अरे ये तो सिंपल बोगला है. I spent many, many years living on Mount Outsong, bathing in the soft breeze and drinking the sweet dew of the mountains. At some point, I somehow gained wisdom and sentience. The Lord of the Mountain, Cloud Retainer, became aware of my existence and began to share many stories with me. She even passed on the secret of cultivation to me. Though she never took me on as a formal disciple, I always saw her as my master. Whenever she took out her tools to work on mechanisms or new inventions, I would also stand next to her and watch. I even contemplated completing my training and becoming an adeptus in my own right. I followed her teachings, and time gradually passed. हाँ तो इसने ही बनाया. ये सिंपल बोगला थी एक टाइम पे. That fateful day 50 years ago. मुझे भी बनाओ. 50 years ago? That's right. Master regaled me with many stories of her past deeds. From them, I learned how she had saved people from a similar crisis in the past. She was the one I looked up to the most. More than anything, I dreamt of becoming an adeptus like her. I wanted to travel the land like she had, relieving suffering, but I was still far from being a real adeptus. I possessed no ability to take on human form and fit in with the nahida छोड़ो अब. Once she learned of my desires, Master prepared a special dose of human mimic. She warned me that the potion's effects would only last 10 years.
And if I were to fail to return to my original form... Oh no. So that was the source of your dementia all along. Was it because of Grandpa? Indeed, I fell in love. Though he was human, he had spent his entire life training on Mount Tianheng. When we met, दादी it was एकदम not full only my first foray into the world लौंडा बाज below, थी. but his as well. Although clumsy and impulsive as he was, you'd think he was the real strange bird among the two of us. But still, वैसे भी मेरा एक वो बचा हुआ चैलेंज he cared deeply about the world and अभी wanted कट सीन में दिखा था. anything to cleanse it. I could not help but fall for him. अच्छा. But my तुम्हारा time तो पूरा एरिया ही continued to बचा tick होगा. away. Oh no. What happened next? I committed an offense. I wanted कहाँ to हो? stay कौन with से एरिया him, में ये? even ये if एलवे नए it वाले life एरिया में full कि of पुराने? pain and पुराने. suffering, even if it meant that I would eventually turn into a monstrosity. देखो पीछे वो दिख रहा है ना. I अरे had क्या कर रहे हैं betrayed दोनों? Master's hopes, but I was too ashamed to face her. So I wrote her a long letter instead and asked someone to leave it outside her. I was convinced that she would not support my decision, and I lacked the courage to speak to her face to face. But that was only the beginning of my Nameless troubles. heroine. I began to suffer from a strange illness. My memories became hazy and confused, and I could no longer keep myself awake. I understood that my pain was caused by my refusal to return to the life मैंने I भी कर was लिया फिर तो fated, ये स्टोरी along क्वेस्ट with my देखते memories देखते. of Crane. I soon अब forgot the true फॉर्मेलिटी कौन cause करेगा of my 1.5 घंटे की? suffering as well. I knew only that I had committed a sin. Looking back, I was अबे beyond भाई lucky सही to have come कैरेक्टर across बनाए that बे, देख तो. traveling merchant. देख रहा हूँ मैं. It was such a fortunate coincidence that we were there at the same time. गाइस ये ब्लू लिपस्टिक क्यों लगाती है? What's wrong? Coincidence? अरे इसका चोच में भी ब्लू है ना. Coincidence? Tea pills concocted you, Master. Don't tell me. Back then, that merchant was actually... Human custom would dictate the conferral of gifts to be in order when one's progeny is wedded, would it not? Consider the pills a symbol of one's best wishes. यही दे के आई थी पिल्स उसको. So when I tried to conceal my name and mistakes from the world and hide जीवन में एक myself लड़की away मिल in नहीं रही है. perpetuity, आप देख the रहा हूँ only क्लाउड person रिटेनर I के. managed to deceive... One still remembers when you were but a fledgling. You possessed a certain fondness for a particular game. You would hide yourself among a group of wild... One found you with such ease every time. 'Tis a truth most evident. Oh, wait! Paimon's confused! So, Cloud Retainer, you found Yuendai again? But how? When? And what happened after that? Perhaps it is now time for one to recount the rest of the tale. अभी ये तो सही है सुधांशु. बिना ऑन किए भी देख सकते हैं कि क्या बोलते हैं कौन-कौन वैलो खेल रहा है. हाँ ये तो दिखता है ना. रायोट ऑन करो उसमें दिखता है तो ऐसे ऊपर कहाँ? बगल में एक नेम का ये तो मुझे ऑप्शन क्यों है. कभी नहीं बताया? अरे क्लाउड मिल गई खेलने को. Upon receiving your letter, बस यहीं पे क्वेस्ट छोड़ दो. one set out to bring you to your senses. हाँ वही छोड़ना पड़ेगा. लेट मत करो. क्या सही है. C3 मिलाएगा. C3 म्यूट गई. देखो. अरे अटैक पे बेस्ट रहता है इसका तो. अटैक 2800 डाल के रखे. साला वेपन कैसा है बे. पंखा टाइप लग रहा है. नोब्लेस डाल के रखे. इसका कॉन्स्टलेशन में भी बर्ड बना हुआ है ना. कॉन्स्टलेशन में हाँ थर्ड वाला ना. टैलेंट में भी तो है. नहीं पूरा साइन की बात कर रहा हूँ पगले. अच्छा ये हाँ. एक तो एडिशनल चार्ज मिल जाएगा. ए सुधांशु. वो निकाल क्या बोलते हैं बर्ड निकाल अपनी मतलब यही. क्या नाम है क्लाउड रिटेनर निकालो स्क्रीनशॉट ले लो बाकी चीजें छुपा के और दिखा दो सबको.
ट्रायल ऊपर लिखा हुआ है वैसे भाई। अरे ये नहीं, अपनी फोटो छोड़, अच्छा जान दे। स्क्रीनशॉट लेके भेज तो सकता हूँ, सब वो हो जाएंगे। ज्ञान दे वाला गिन फिर सब और ही स्मार्ट लोग। In truth, one had more than a few misgivings अरे about your पहले chosen देखो ऐसा था क्या ये? as an exorcist. His talent, but soon one came to appreciate the devotion he अभी भी bestowed ऐसा ही है upon you, शायद। unwilling to थोड़ा अलग force हुआ है, someone ऊपर of पे such सजा talent. दिए हैं लोग। One wishing to grant you a life without regrets. As for how to वो deliver नहीं the दिखाया medicine, लुमीन वाला सीन। after much contemplation, one took great care to alter one's features. अच्छा तो and यही select आई the थी बन appropriate के। attire. As one expected, you were most ignorant of one's true identity. You showed... One was quite torn. अभी और खेलने को मिलेगा भाई। बिल्कुल मार रहा हूँ यार, नहीडा का हाइपर ब्लूम तो चल ही रहा है। मैं जा रहा हूँ बुल मारने। अरे काकारे मोरी तेरी रज। सुधांशु की गांड फट गई, आगे जमीन भी है कि नहीं? नहीं है ना। One would speak to you about another matter, if you are amenable, even considering your loss of memory. One was simply flabbergasted that you could so easily forget the consequences of consuming medicine infused with adeptal blood. Its proclivity to attract monsters is hardly that complicated of a लड़ाई भी concept कर to सकते हैं remember. यार। To think that you tried to travel while एनर्जी weak नहीं with रिचार्ज हुई अभी sickness and तक। heavy with child. Had one not intervened to clear the fog, all of you would have been lost during the night. एक अल्ट्री तो बनता है कि सुधांशु? इसीलिए तो एनर्जी रिचार्ज कर रहा हूँ। अब आएगा ना। Make way for the Adeptus! बन गई जाओ। वाह, ये तो C3 पे भी कितना टट्टी डैमेज करती है। अरे Those monsters would hardly have सपोर्ट है गाइस, pursued सपोर्ट such है। ferocity. Said God मालूम one पड़ा आगे was चल के ये भी after कोई all बहन की an लौड़ी गॉड active निकले, जैसे मैंने participant in न्यूलेट the को स्किप कर Archon दिया। War. In the end, नहीं ये तो one was ऑलरेडी revealed to एडेप्टेशन है ना, see इसका the कुछ door निकलने का है ही नहीं। at the break of dawn to see you एडेप्टिस को ज्यादा घास नहीं डालता मैं। हाँ साओ भी अच्छा है भाई। वो अलग बात है, उसका मास्टर आपके पास बैठा हुआ है। जोंगली। Now you should have a complete understanding of the events. क्या मतलब, मैं स्टोरी नहीं सुन रहा था। The crane who took care of me when I was sick must also be... मैं भी नहीं सुनता। One had almost neglected to नहीं recount नहीं the लास्ट absurdities वाली, of that tale. मुझे बस इतना पता चला कि पंजी की बातचीत कौन सुनता है? अरे लियोए आ गया ना अपन। हाँ क्या मस्त बना है यार ये लोग। अरे ये क्या गाइस, ये क्या पास्ट वास्ट में घूम रहे क्या? एकदम खतरनाक डिजाइन। मतलब ये वाला तो वही है। ओह माय गॉड। Just as you घूम and लो I पहले। अरे troubled यार one with घुस her गया। upon finding you when one asked you why, apparently you believed that one could not हार्बर possibly वगैरह be भी a देख true लेते adeptus, पहले कैसे था। because all illuminated cranes are white from tip. One had no choice but to apply powder to one's body ये दिखा to रहे हैं conceal कैसे the बचाई थी। variegated nature of one's appearance. It bears mentioning, however, that as a पाउडर crane, लगा के my चली dye गई was थी गाइस nearly बचाने। entirely pure white in color. Perhaps डोमेन से बाहर चला गया, आप घूम लेना जब करोगे। now all
कह रहा has. हूँ जो भी कहो मस्त माल है। One owes you an apology, Yuenda. One has always viewed you. Still, one could not reveal your identity right away. Memories are most meaningful when recalled by those who... Master, I must ask. If you found me all those years ago, why did you leave me be, even though you knew about my mistake? Why did... One has never regarded your action as a mistake. It was a simple choice, nothing more. When it is time for one's progeny to leave the nest, it is the responsibility of an elder to let them fly free. Yet, when your wings grow weary and the night grows dark, 'tis a refuge referred to by many a name in mortal writing. One speaks, of course, of a place not unlike one's own abode. Thank you. I just... 40 years ago, you chose a path without a future. Though one used one's own even the power of an adeptus has its limits. Had your condition continued to deteriorate, you would have forgotten your life as a human entirely. In the end, you would have turned into a creature lacking in the ability to even comprehend its own Fortunately, you were able to avoid that scenario by reclaiming your memories. Though one sped the process along by providing some guidance, the result is entirely a reflection of your own... So, what's gonna happen to Granny? One will help her reclaim her original form as a wild crane. If it be fated, she may recover her sentience one day. She's gotta go back to being a regular crane, huh? Master, you've already done more than enough for me. I don't know how I could possibly repay your kindness. This is a better result than I could have ever hoped for. Not... Granny? Please don't leave, okay? You're all I have left. Don't be sad, अरे ये child. बच्ची, Granny has led a wonderful life. वो तो जी ली, इसके पास अकेला बस यही ग्रैनी है, बाकी सब मर चुके हैं माँ बाप। Don't forget to eat well, okay? A growing young lady like yourself needs lots of good food to grow big and strong. Promise Granny you'll take good care of yourself when... I promise, Granny. Good girl. Good girl. I won't stop until I can turn into a human without having to rely on anything but my own power. When that day comes, we'll be able to live together again. You and I. That's a good girl. Even though we won't see each other for a little while, as long as we both work hard. I'll eat well, Granny. I promise. And I'll wait for you. That's a good girl. I'm so sorry, Master. Thank you. बर्ड बन जाएगी, हाँ सिंपल। You. Let her be. At her age, crying is a natural, if not fitting, response to such an... Tears are a necessary part of maturation. Now that the issue has been resolved, you should also take a moment to relax. अच्छा ये मशीन सही है यार। यहीं शायद ट्रैवलर और पाइमन को भी सुला देंगे। ये ल्यूमिन के सपने में आती है क्या? हाँ, डिनर विनर टाइप कुछ तो होता है। पाइमन का मुंह जब किया मेरे फेस कैम से।
अभी देखेगी। I always believed we would see each other again, that our days of separation would finally end, and all my troubles would be behind me. रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अरे क्या सही बनाया बे। ओफो। If only things could stay this way forever. उठ गया सपने से। रोने लगा। A nightmare? Curious. If you're relaxed, shouldn't your dreams be pleasant? It was a good dream. It's just... अबे ये बोला। मुझे लगा बस सपने में ही बोलेगा। सर इसके हाथ देखो। क्लाउड रिटेनर के। देखता हूँ दोबारा दिखाते हैं लोग। अरे ये वही चिड़िया ना रेडन लेके घूमती रहती। Words of comfort are not अरे always strong नाखून है चुड़ैल वाले भाई। हेलो। suits. You are doing बर्ड all वाले you पे। can. One can see your strength of will, your fearlessness in the face of danger. And so, whatever your dream may be, one believes that you shall achieve it. Of course, whenever the perils you face overwhelm you, or you become weary, one is always here for you. Oh. After all, as an elder, क्या बोली? it is only right to look out. ये हमेशा रहेगी इसके साथ ऐसा कुछ। ये अपने आप को वन से वो करती है ना। अबे पायमन को देखो। Was Paimon sleeping just now? Oh, Paimon wasn't talking to you. Paimon had a dream about eating grilled chicken drumsticks, that's all. Madam Adeptus? Oh, Shuyu, you're awake. How do you... ग्रिल्ड चिकन खा रही थी ना सपने के लिए। Thanks. I know I'll see Granny again someday. Madam Adeptus? Could I ask you something? Would you take me in as a disciple? Oh. And have you reasons for this sudden interest? I know Granny thought what she did back then was wrong. She felt really bad about it. Without that mistake, I would have never been born. Even though Granny lost her memories, she never forgot to show me how much she loved me. So, I could become a cool adeptus like you, and help a whole bunch of people, just like Granny wanted to do. Upon some reflection, one supposes you are no mere mortal. The fact that Yuandai's blood flows through your veins is proof enough of that. If this is what you desire, one shall make it so. Thank you so much, Madam Adeptus. No, I mean... Shuyu, are you sure about this? Paimon's gonna let you in on a little secret. We've seen Cloud Retainer's 2 other disciples, and they pretty much eat nothing but bitter herbs like chin-chin and fire grass. Bye, Paimon. If you join them, you'll never enjoy one-man restaurant's delicious cooking ever again. How utterly preposterous. One has never enforced such a rule. Every individual must find their own path to enlightenment, so long as one retains a pureness of spirit. Well, you say that, but Paimon's not seeing any tasty treats up here now, is she? Although Mount Outsong is rich in natural beauty, its location does preclude access to certain finer mortal comforts. That is precisely why one plans to relocate to Liyue Harbor. Shu Yu shall have the honor of becoming one's first disciple in the human world. Whoa! You're
One has never concerned oneself with the location of one's residence. From the very beginning, one has sought only solace and peace. Yet in the end, all of one's disciples ended up in Liyue Harbor. Ganyu, Shenhe, जोमेटो की Yuan आवाज आई Dai. क्या मुझे? They all मस्सी came भाई। to life among the mortal world. One has reflected on this fact for many क्या years ऑर्डर now. किए? One can only assume that it is due to वेज some बिरयानी failing on one's part as अच्छा। an elder or master. वेज बिरयानी क्या कह रहा Failing हूँ perhaps पुलाव of कहते हैं पुलाव recognizing what it was वही that मैं one बोलने was वाला most था। curious as to what aspect of Liyue Harbor could have enticed them to क्या remain चीज there. पुलाव और वेज बिरयानी में Why difference are होगी you मेन all बात। so silent? बताओ Just a bit. One will be assuming the identity of a human while residing in Liyue Harbor. You should take care to मेरे avoid कान तरस रहे disclosing हैं one's सुनने के true लिए वेज identity. बिरयानी और पुलाव में डिफरेंस के Don't लिए worry, we'll help you keep it a secret. So, when can we expect to start seeing you in the city? Perhaps in 2 days. One has already. Seems like you've been out. तहरी और sensible पुलाव plan. में डिफरेंस है हाँ Also, तहरी कोई why बिरयानी don't you कहते हो तुम Awesome! Hey, didn't we promise Shincho that we'd tell him what we found out? Should we make a trip to the Feiyun Commerce Guild? It's totally up सुधांशु to you. क्या हुआ? फ्राइड राइस अलग होता है बिरयानी अलग होती है पुलाव अलग होता है अरे ऐसे तो तहरी अलग बहुत होती है कुछ है। आज किसका बर्थडे था मैंने देखा भी नहीं। लेनेट और लेनी दोनों का बर्थडे है। पुलाव का वो आता है पैकेट सा देखा होगा वाइट सा अलग सा होता है भाग यहाँ से नहीं बात करनी इस बारे में अब तुम चावल भी खा लो पुलाव समझ के तो अलग बात हाय फिर तुम एग्जाम्पल दी से भाई ओ फूल 2 दिन बाद। अरे ये क्लाउड रिटर्नर अब चली गई वहाँ ल्यूए में रहने के लिए। अब गानी और सने के साथ शायद रह सकती है। और ये छोटी बच्ची जो थी ना वो उसकी नई वो बन जाएगी डिसाइपल जो भी है। देखते हैं उसका नया घर कहाँ है फिर वहीं जाके विश करेंगे। क्यों हंसे भाई? नया घर दिखाया अभी देखते हैं ना दिखाएगा तो फिर जाके वहीं विश करेंगे अपन। मेरे ख्याल से उधरी कहीं पे रहेगी जहाँ पर अपन चाय वाय पिए थे फर्स्ट टाइम जब ल्यूए आए थे अरे नहीं यहाँ है। Your concerns हार्बर are पे excessive and unfounded. To be quite honest, in what way are any of these ordinary? Every single item here could be worth more than everything I own combined. I simply can't risk shelling out that kind of mora without proper scrutiny. If I'm wrong, I would never be able to earn it back, not even if I worked every single day for the rest. I have to be careful. Yes, you can never. We're here, Clow. Miss Shenyan, what are you guys arguing about? Ah, perfect timing. This ignoramus is questioning the authenticity of my wares. I'll have you know, these items have remained untouched in my personal collection for several hundred years. To question their legitimacy is pure folly. Several hundred? Indeed. They're family heirlooms, you see, passed down over many generations. Yep, they've definitely been around a while. We can vouch for her on that one. Hear that? Had I not found myself in need of mora, I would scarcely have had the heart to part with them. Indeed, you should consider it an honor to even have the opportunity to behold them with your own eyes. Doubt their authenticity any further, and I may just decide to take them to another buyer. Whoa, please don't go! I apologize for any insult, miss. You see, I know full well that I lack the knowledge to judge the true worth of these items. If you could wait but a moment, I've hired an expert to appraise them for me. He should be... An expert, you say? Very well. I will wait for a little while longer then. अरे ये अपना सामान कुछ कुछ बेचने आई है। This is my new residence. इतना पुराना है My ना। company in the future.
This is where you देख can के find इस पे सवाल उठाने लगा कि लीगल भी है या फिर नहीं। It's you two again. Hello. Shiryu! You got a new outfit! It looks... Master made it for me. I like it too. Huh? You know how to make clothes? Do I know how to make clothes? With the support of the proper mechanism, sewing is hardly a challenge. Master, I brought in most of my stuff. There's a few boxes left, but they're kind of heavy, so I just left them outside. Fret not, I shall help you move them into your room. Actually, I should probably sort through my stuff a bit first. Everything's kind of messy right now, so maybe you could not look yet, Master? It appears my young apprentice has her own fair share of secrets. No matter. Do what you must try. Now, this expert you mentioned. When can we expect their arrival? Soon. Here, allow me to make some introductions. अबे Zhongli है। Mr. Zhongli, a well-respected consultant at Wangshang Funeral Parlor and an expert in all manner of valuables and antiques. अबे Mr. यार। Zhongli, this is Miss Shen Yun. She's the one who's looking to sell the collection of valuables I mentioned earlier. ये तो जानता ही है इसको। If it isn't Miss Shenyun, it has been quite some time since our last meeting. Indeed, most serendipitous. Have you been faring well as of late, Mr. Zhongli? Quite well, thank you. I was fortunate enough over the past few days to enjoy both a stroll in the mountains and a So you... Indeed. How fortunate we are that fate has brought us together again. You are too kind, Mr. Zhongli. True collectors pride themselves on their wealth of knowledge and eye for detail. I can say without it. Why, you flatter me, Miss Shenyun. It would seem that you are as self-effacing. Not at all, Mr. Zhongli. While I am loath to butt into this conversation, I must... You two already knew each other, and you seem to have quite a cordial relationship. Can I be certain that you're not working together to swindle me? I mean, you never know. A preposterous accusation. The heavens themselves would collapse before we would conspire to do such a thing. Miss Shenyun speaks the truth. Contracts are built on honesty and trust. If that proves to be beyond your capabilities in this instance, this transaction may be taken elsewhere. Say no more. Let us depart. I jest. What fool would still harbor doubts after Mr. Zhongli himself has vouched for the goods? Miss Shenyun, what? अबे यार। I deeply apologize for doubting you. So, Mr. Zhongli, could you please... There is no cause for concern. They are indeed rare and precious valuables. Take this mechanism, for instance. Though one may not immediately... The same can be said for this one here. I am sure you have heard from your travels that the study of mechanisms is among the most wondrous art. All right. Since I hired you as my consultant, Mr. Zhongli, then in that case, Miss Shenyun, I'll take the lot. However, since the final sum is quite large, how about we start with an initial deposit through the Northland Bank? The Northland Bank? Huh. Oh, you... I fear people only use the term bank nowadays. In that case, I'll be off for now. I'll return to collect the goods once... My friends, have you been doing well? We've been great. How about you? Paimon did... My days have been quite अबे pleasant as दो well. लोग जब मिलते हैं I ना have been पुराने greatly दोस्त enjoying the अलग ही conversation सीन with चलता Mr. है। Shaozu requested my services. As for you, Miss Shenyun, I presume you must be looking to settle in the city? I must say, the name Shenyun sounds exceedingly strange coming from you. Perhaps you could dispense of that particular epithet in further... Whatever for. Am I not addressing you as a friend should? Well, that is true, but... Alas, refer to me however you will. After all, a name exists such that others may address you with it. One is hardly ignorant of that fact. It would seem that you have gained many valuable insights over the years, Cloud Retainer. One has indeed.
One's previous stays were all brief. Now that one has made up one's mind to move and settle, one has gained a much better appreciation of the hubbub and commotion. This city is much changed from how it was more than 1,000 years ago. Not unlike the ocean tides, so too shall the movement of people ebb and flow. Alright, that's enough reflection for today. No need to get all sentimental on us. You make a valid point, Paimon. Now that the sale has concluded, what say one plays the host as we try some specialty dishes together? One must profess great interest in trying bamboo shoot soup. Perhaps you have forgotten, Cloud Retainer, but I once tried my hand at that dish. You were at the table on that occasion, so logic dictates that you should have already tried it. Oh? What occasion was this? It was a reunion between friends several centuries ago. Alas, you must have been too preoccupied to secure yourself a portion. Or perhaps... Hardly. 'Twas most certainly out of consideration for the others in attendance. In but a moment, one will show you what it means to have a true deftness of hand. It is settled then. Bamboo shoot soup, mora meat, crab roe tofu, triple layered consommé. One has already passed word to Shenhe and Ganyu to make a reservation. It is prime time for them to meet one's newest disciple. Is that agreeable to everyone? It should be a most splendid occasion. Shu Yu, come now, it is time to dine. Ah, this gentleman over here is Mr. Zhang Li. He is, A humble employee of Wangsheng Funeral Parlor. ये भी बताने ही वाला था मतलब वाले Mr. Zhengli. That should be everyone, right? What? Sounds good. Actually, Master, have you ever tried Adeptus' temptation? I heard it's impossible to stop eating after even just one bite. You know, 'cause... that sounds rather implausible. Although with the right preparation... Huh? Why are you all walking so fast? Hey, wait for Paimon! Hey, wait up! खत्म अच्छा था यार अच्छा था मस्त स्टोरी था We're way behind schedule. लास्ट का सीन और खतरनाक हो गया जब जोंगली आया मिनट देखने दो क्या देख रहे हो? कोई वैलो वैलो खेलना है आप खेल लो ये लोग खेले ना पंकज भाई और शूटर अकेले खेले मैं इनको शाम को बोला भी था जबकि हाँ आज खेलते हैं। चलो कोई नहीं स्ट्रीम तो अभी बंद कर ही देता हूँ देखूंगा बाद अभी खेल अभी जेंशन में खेल नहीं रहा ना स्टोरी कर रहा था इतनी देर से बाकी कल को मतलब वैलो खेलने जा रहे हो ना देखता हूँ नहीं भी खेलूंगा अभी तो ठीक है ये अच्छा लगा मुझे ओके गाइस तो फिर मिलते हैं पता नहीं कल शायद करूँगा स्ट्रीम तो कल ही मिलते हैं बाय बाय